नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, सब भाइयों बहनों जानवरों, मोस्ट वेलकम। यार ऐसे लग रहा है कि वी हैवंट डन अ शो इन सो लॉन्ग। क्या बात है, क्या वजह है? मे बी वी हैवंट डन अ शो इन सो लॉन्ग, ऐसा है, ऐसा फील हो रहा है? लेकिन वी आर बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। लेट ऑप, हाँ बिल्कुल लेट ऑप। मुझे भी अभी समझ आया कि ऑप का क्या मतलब होता है। बिहाइंड द सीन्स आई वाज आस्किंग द यंग गाइस व्हाट डज ऑप मीन, बिकॉज़ थोड़ा सा बूढ़ा होना यार, आई हैव टू नो these terms and conditions of doing it. So as of course I'm guessing the baby of the group, Daksh, the baby of the group must be. I guess 28, yeah. हाँ, Yeah. तो उसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है. So yeah, I blame him. Blame him. He's the one who is busy doing makeup, looking pretty. I have to keep up the sex appeal of the हाँ, group. बस क्या देख ही पाता ना. करें यार मतलब. नहीं पता ना क्यों. That is Look, true. look. This is what we're getting. This is the kind of comments we're getting. Again, not putting Daksh in the thumbnail. यार समझाया तो था कि you know what I mean. होते हैं यार, वजह होते हैं. होती है यार, tactics होते हैं यार. We want to Yes. look good. We can't put Daksh in the thumbnail. We want to look good then. So, लेकिन we will fix it. We will fix it. We will fix it. Please smash the like upon entry. You are all very welcome. As you can see, the full gang is here. Yeah. Drog Baba will be joining us in about 20-30 minutes as well. The rest of the guys are here. मानस कैसे हो यार? मैं तो बहुत relaxed हूँ, tired तो of course because of Ramadan. By the way, everyone who's celebrating and observing रमजान Ramadan, मुबारक. Ramadan Mubarak sabko. Ramzan Mubarak. Hope everything is going Ramnavami, well for you guys, Ramnavami की including शुभकामनाएं. absolutely. Very important message to always give to all the people that are tuning in. लेकिन मानस मैं ये बोल रहा था कि I'm normally international break ना. You're always watching the clock. कब खत्म होएगी, कब खत्म हो, कितना अरसा रहता है, कितना टाइम रहता है, कितने मैचेस रहते हैं. Come back man, Premier League, come back, hurry up. मुझे कोई शौक ही नहीं है hurry up की इस दफा. तू कैसा है? मैं बढ़िया हूँ यार. इंटरनेशनल ब्रेक फेल्ट बहुत ज्यादा लॉन्गर बिकॉज ऑफ वो बोर्नमाउथ का रिजल्ट. ये इंटरनेशनल ब्रेक फेल्ट लाइक जब सीजन खत्म होता है और फिर अगस्त में सीजन शुरू होता है, वैसा पूरा ब्रेक लगा है बिकॉज ऑफ दैट हॉरिफिक रिजल्ट. लेकिन जो 3 गेम आ रही है ना, और निधि, ग्रिस भाई, आई एम श्योर यू विल एग्री, बिकॉज ऑफ दैट फटी पड़ी हुई है. मतलब usually you are like okay yeah, international break is done, okay, the mighty red men are in action, चलो मजा आएगा. But now ये season थोड़ा reality check भी मिला है, and then we have to be realistic. So the 3 games, for all after half time of the first game we will be like अरे इससे अच्छा तो international break ही थी यार. मैं यही सोच रहा हूँ, honest to God. मैं तो कह रहा हूँ कि खेलो यार, और इंटरनेशनल खेलो यार कोई है टूर्नामेंट उसको भी ले आओ यार. Let's start another World Cup. निधि, मैं तो honestly I'm maybe slowly tomorrow जब जोश आएगा ना मैन सिटी लिवरपूल का और Newcastle Manchester United, of course it's going to depend on our result first as a Liverpool fan. देखूंगा ना कि क्या रिजल्ट है. मे बी फिर जोश आ जाए, मे बी वो पैशन आ जाए वापस. राइट नाउ निधि कोई पैशन ही नहीं है यार. Okay, so it feels like this, Chris bhai. I know people are observing Ramzan and all, but this is just an example. It's like you had very bad alcohol, बहुत गंदा hangover हुआ, ठीक है? And then you had a shit night, shit morning, whatever it is, right? बहुत गंदा hangover है. शाम में you are saying like hair of the dog, man. I just want to have some nice drink again, and I don't want to feel hangover again. And सामने रखी हुई है Foster's. तो पीने का मन कर नहीं रहा है because it's bloody Foster's. So that's what this international break feels like. यार निधि is the king of analogies man. Yeah. जब शुरू करता है ना, honestly you just want him to carry on. अरे यार तू कुछ ना बोला कर, तू सिर्फ एनालॉजीज बोला कर पूरी शो में. और तू कुछ ना बोल. I'm not going to ask you any football related questions. Nidhi, don't overdo it, because देखो मतलब याद है जब भी सिद्धू मतलब
फ्री I फंडे overdo में it? वो शायरी करने लगता था, देखो याद है कितना इरिटेटिंग होता था जब वो पहले नहीं, but करता था, मैं तभी नवजोत सिंह मैं सिद्धू। तभी बोलता हूँ मैं तभी बोलता हूँ जब मेरे दिमाग में आता है. Did I overdo it? नेवर नहीं नहीं, अभी नेवर सही है, नेवर अभी नेवर सही है, नेवर। अभी सही है. अभी तो हाँ, बिल्कुल बढ़िया है. नाउ तो वी लुक फॉरवर्ड टू इट जी। Saeed, my good friend Saeed is in the building. He says, Salam friends, मेरा नाम Saeed. अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, सब खैरियत? मेरा नाम Saeed. मेरा Oh नाम yes, शायद you है. googled कमाल. that, ain't it, you piece of shit. You googled that. I like it. I like it. Wasn't he like wearing a mask and for a stream? यार बेसिकली जब Was उसकी that बेइज्जती, जब उसकी टीम की बेइज्जती होती है ना, when they get when they get was that when they get drilled, right? Right, he comes in a balaclava, so nobody so nobody sees what he looks like. Hello all, why everyone so handsome? बहुत मेहरबानी यार तेरी यार, thank you very much यार. Oh, okay. He says, no, I didn't. I went to Urdu speaking high school. Oh my God. Spartan says he wears a niqab when they lose. Oh, Lord. Honestly. Daksh, coming to you, tu to pura opposite hai. You must be like we used to be. We don't want international break. हमें तो कोई break नहीं चाहिए. हमें सिर्फ Liverpool चाहिए. याद है? Remember we was on the quadruple hunt Yeah. many moons ago. Yes. याद है? We wanted to watch Liverpool every week. No international, no break. Daksh, you must be gagging. Like, क्या यार, ये क्या इंटरनेशनल ब्रेक आ गया यार, हम तो मोमेंटम में खत्म करें ये सीजन को. I want to know what the outcome is. Surely you're dying for it to come back. Yeah, I mean, yeah, for me, international break ज़्यादा anxiety inducing हो गया था यार. मतलब you'd see all these matches and you'd just pray कि कुछ भी result हो, बस player injure ना हो जाए. You saw that Rodri tackle on Odegaard and you're like, भाई, अगर Odegaard को injury हो जाती, season is over. You see Kieran Tierney hopping off. You see Thomas Partey being rested. You would be like, "Arey, yaar, just end this. Just end this. Get back to the Premier League. Just get safe and sound somehow. Let's get back to football. Let's get back to things that matter." But to be honest, Grizz bhai, मेरा तो plan है from today onwards till the weekend of matches. मैं तो full Liverpool के chants वगैरह सब याद रखूंगा because मेरा इन्वेस्टमेंट तो लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी में ज्यादा है इस हफ्ते. बिकॉज इफ लिवरपूल डू व्हाट लिवरपूल डू बेस्ट व्हेन दे फेस द बिग टीम्स, यार मतलब मजे आ जाएंगे. टू बी ऑनेस्ट मेरा यार हम भी ऐसे ही होते थे यार, हम भी ऐसे होते थे कि जब मैन सिटी के खिलाफ कोई हमारा कोई एनिमी था ना, निधि ऐसी ही बात है ना कि when Man City were playing, for example, Chelsea या Arsenal या Man City या Spurs, जो normally we'd think, oh, who cares, लेकिन हम उस टीम के सपोर्टर बन जाते थे. Number one, yes, come on. But when we were in the hunt, the buggers used to not give up an inch, right? But when we were in the hunt, like always, like on 24/7, boom, boom. And when this year, when we've fallen off by multiple notches. वो लोग भी साले थोड़ा गिर ही गए नीचे. But I think Grizz भाई, मैंने पहले भी बोला है, I think Arsenal is going to win it. It looks like it's set up. ये कब चेंज, कब माइंड बनाया ये? नहीं, मैंने नहीं, कब I से think बोल रहा हूँ. Vidhi bhai is to going on since I think the January transfer window only. I think he has been saying. मैं तो कब से बोल रहा हूँ Grizz भाई. I think it's all coming together for them. Those last minute winners, City slipping up. Abhi Haaland is not in training pictures. Foden is apparently injured against Liverpool. तो मैं तो भाई मतलब यहाँ पे बल्ले बल्ले हो रहे मेरे तो, to be honest. जो एक इंच की भी खुशी मिल जाती है, I'll take this. हाँ, ऐसे ही होता है. Hamza कहता है love from Chakwal in Pakistan. I actually been to Chakwal, Hamza. Most welcome. Your accent is a little bit different. I've actually learned how to speak it. No, not learned how to speak it, but 1 or 2 sentences मैं बोल सकता हूँ. तो बोलूँगा, लेकिन अभी थोड़ा से नहीं, आज वैसे भी मैं तुझे सबको warning दे रहा था that I'm very tired today. And when I'm tired, my Hindi, Urdu, Punjabi is gonna be worse than before.
So just bear with me today, right, guys? In the chat, you guys, if I make a mistake, don't laugh openly. Like मुझे private text कर देना कि ग्रिस भाई क्या बोला तो कोई समझ नहीं आई. लेकिन don't make it open, public नहीं बनाने का यार. I'm very tired, and when you're tired, सब चलता है यार. I'm gonna mix it up, Urdu, Punjabi, Patwari, Sileti, everything. Pelwandi, Rodi, Revdi. yeah. Revdi? Revdi. 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 Oh, we speak Patwari. Okay. Okay, I didn't know you guys speak a different, like, मैं आंदा पे instead of मैं आ रहा हूँ or मैं आंदा पे. In Chakwal, they say मैं आंदा पे. Yeah. I think our countries are the only like very few countries ना कि मतलब within No, all the same. your Accent, dialect की बात कर रहा है ना? no, I'm talking about different languages like India में for example like if you move 200 kilometers up north or south हाँ. आपके मतलब everything changes literally. You might not know the language that they speak. And India is हाँ, 7th largest country in the world. So मतलब we literally have hundreds of languages, which is ridiculous. Ridiculous in a great way. in a Like great there's way. so much. It's amazing, yaar. Yeah, ridiculous in a great way. कि there's It's so much. amazing. Yeah. We have 544 dialects. Oi, India. oi. Right, so it's like It's just every like five more than the number of players Todd Bowley has signed for Chelsea. 5 more than the number of it's like every 200 kilometers you're in a different country. लेकिन इधर भी अगर for example dialects की बात करें सिर्फ, so you have so many different accents here as well, like the Scouse accent. कितनी बार बोलते हैं लोग Scouse नहीं समझ आती. I was raised in East London, so the Cockney. If I speak some Cockney terms, किसी को भी समझ नहीं आएगी कि क्या मतलब है. उसका rhymes होता है, rhymes and slang बोलते हैं. So the Scouse, the Birmingham, कोई आदमी बोलेगा कि Birmingham का accent भी इतना अजीब होता है कि you have to speak slowly to understand it. So it's different. Of course, Scottish and Irish accent is different as well. So yeah, it's diversity. Gujarati यार कोई बोल सकता है आप लोग. Tommy Shelby taught us the Brahmi accent, Chris bhai. हाँ, exactly. Exactly. He नहीं, मुझे तो स्टैन कोलेमो ने सिखाया था यार पहले. शेल्बी से पहले स्टैन कोलेमो ने मुझे सिखाया था. Who speaks Gujarati? मतलब समझ आती है because मुंबई में काफी मुझे समझ बहुत कम आती है. कोई पैनलिस्ट लाना पड़ेगा, कोई गुजराती बोलने वाला. गुजराती पैनलिस्ट लाना पड़ेगा. हाँ, कोई पैनलिस्ट. Sorry, तरुण भाई. I'll guess if you want me to try to speak Gujarati, but then you might get offended. Jodi, exactly. Jodi, Newcastle accent is very hard to understand. Lekin Liverpool is very hard to understand as well. Yeah. The Scouse accent. Yeah. तो नहीं, Liverpool की team यार. Liverpool की team is hard to understand यार. So Daksh to बोल रहा था Manas, where he's saying like tomorrow all eyes or all his focus, especially for the first game, will be on that big game. Big game. How are you feeling about that game? Normally तो ये हमारी क्या बोलते हैं? This is the zenith of emotions when we play normally in this game. This game is basically a title decider for the last how many years? This time it's could be a title decider, but not for us. Yep. Yeah. क्या feeling है? I'm not too confident, to be honest. मैं realistic हो रहा हूँ इधर. देखो, optimism and love aside, Bajcetic is out, Thiago is out. I don't know who's gonna play in midfield. अभी क्या है ना, we don't know कि अपने midfield combination क्या होगा for the rest of the season. From now till the end of the season, हमें पता नहीं कि हमारे 3 कौन रहेंगे midfielders. Sure, Haaland का issue है उधर. Luis Diaz being back is great. It's great news. मतलब that is a boost that we need. I really want to see Diaz, Nunes और Salah play a game together. I think शायद से देखा ही नहीं हमने. I could be wrong, but या फिर बहुत कम देखा रहेगा. Salah, Diaz and Nunes only one game for Palace. Half Arsenal. Where we put in our best attacking performance for a long time. Oh yeah, but even then Nunes Diaz got injured at half. One half. Yeah.
या one सो half मतलब we've seen. सो लाइक इट्स बीन ऐसा सीजन, आप समझ सकते हो कि मतलब, बट ऑप्टिमिज्म है, एक्साइटमेंट है, क्योंकि वी देखो, मैं तो फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ द सीजन 36 पॉइंट से, मेरे हम्बल ओपिनियन में निधि और मैं बात कर रहे थे, हमें 30 पॉइंट बेयर मिनिमम लाना है टू हैव अ शाउट ऑफ फिनिशिंग टॉप 4 में। और अभी आपके अगले 3 गेम है, सिटी, चेल्सी एंड आर्सेनल। सो आई एम नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक, एंड मैं आपका भी सुन रहा था क्रिस भाई, योर 90 योर पॉडकास्ट, उसमें आप यू ऑल्सो साउंडेड वेरी pragmatic. You're like कि हाँ बहुत मुश्किल है, मतलब we've left it too late times. This game, unless we need to win, we need to get 6 points in the next 3 games. ये मेरा opinion है. So I don't know after the international break how this is like a new season. This part of the, if we treat this like a new season, this part of the season, things could change. But I am not too optimistic. I think City will win this. निधि, तेरे पास कोई है, कोई मोटिवेशन की कोई स्पीच या कोई ऐसी वैसी चीज? मानस ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जो मेरा मेरा थोड़ा सा मूड, होप, मैं कोशिश कर रहा था कि हाँ मे बी इफ वी स्पीक अबाउट इट, थोड़ा सा थेरेपी होएगा, बातचीत होएगी, ब्रदरहुड, वी माइट गेट मोटिवेटेड। उसने तो मुझे और खत्म कर दिया। तू ही है, थोड़ा सा कोई बचा ले। कोई है चांसेस हमारे लिए? डियाज कमिंग बैक, Jota more fitness, Nunes looks to be fit again, Mohamed Salah had a good international break. Grace क्या bhai, को- but the problem is अगर मैं tactically बात करूँ ना, the issue is that City will try to play the game in the midfield, and we have nothing there, right? Yes, we have Diaz available. Yes, we have Salah available. We have Nunes available. But वो basically वहाँ पे वो गेम खेलेंगे ही नहीं। वो गेम खेलेंगे मिडल ऑफ द पार्क, वहीं पे वो दे विल ट्राई टू डोमिनेट, दे विल ट्राई टू बी कॉम्पैक्ट सो दैट द बॉल इज विद देम, द बॉल इज थ्रू द मिडफील्ड, एंड आई डोंट सी हेंडरसन, फैबिन्हो, दीज ये जो फॉर्म में है कि वो कनेक्ट कर पाए मिडफील्ड और डिफेंस को। यस, इट कुड बी अ केस ऑफ कि हम बहुत अच्छा डिफेंस करें एंड वन डायगोनल बॉल फ्रॉम वैन डाइक एंड इट साला रन्स बिहाइंड and he lays it off to Nunes and finishes it off. That fantasy, it plays in everyone's head, right? कि एलिसन का एक कॉर्नर पे एक कॉर्नर किक आता है and Salah keeps running and then scores. वो है, but we have to look at 90 minutes. Look, City will be up for it. We beat them, so they will want to get one over us, right? We've been their historical rivals. I think जो भी चांस है ना ग्रिस भाई ये मैच में, it will come down to how effectively we are able to defend, because tactically तो ये if we have to win, it will be an ugly win. It will not be a pretty win. If जो 1% chance है, it has to be an ugly win. यार I 1% नहीं 1% नहीं नहीं बोलो यार, 1% नहीं बोलो। नहीं, it is I would say 30% chance of winning against Manchester City। और मैं निधि इज वो फिगर ऑफ स्पीच निधि बोल रहा था 1% मेरे हाँ हिसाब से, मुझे but समझ हाँ है, मुझे समझ हाँ है। बट इतना भी नहीं नेगेटिव यार हमारा। हाँ नहीं अदरवाइज अदरवाइज उसका नाम रख दूंगा नेगेटिव निधि। नहीं, चलेगा। द पॉइंट इज ना ग्रिस भाई, जब भी रियलिस्टिक भी रहना पड़ेगा, जब भी हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे एट द एटिहाद, हम स्ट्रगल किए हैं, बिकॉज उनसे बॉल लेना उधर बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं यही, मेरा ऑप्टिमिज्म ये है कि ओके, इंटरनेशनल ब्रेक, एवरीवनस फ्रेश, जैसे आपने बोला, ट्रीट दिस एज अ डिफरेंट सीजन, लेट्स स्कोर क्विकली एंड सी व्हाट हैपेंस, मे बी सिटी क्रम्बल्स। यार ये मुझे समझ नहीं आ रही। I'll वीडियो टू मोटिवेट क्रिस भाई। I'll tell you one thing that can work in our favor, and it has nothing to do with us. Arsenal's luck. और नहीं यार ऐसे ना बोल। मैं बता रहा हूँ ग्रिस भाई, Dax, you're not gonna accept that, man. You तेरा लक हमारे परफेक्ट मेरे को तो हुक, क्रुक, शुक, बुक कुछ भी जो मिल मर्जी जाए, हो जाए, रिजल्ट चाहिए। मुझे तो बस चाहिए रिजल्ट। हाँ, निधि भाई कह रहे थे लक Grace हासिल। bhai, That is actually a good point. you really think in any other season, City goes to Nottingham Forest and draws a game? No for us, never.
Never happened when we were around. Yeah, that's so true. Yeah. Any other season City would चल पैलेस से स्पर्स से वो लोग हार जाते हैं, चल वो वो तो तो हो उनका जाता है. होता है होता है उनका, बट सिटी के रिजल्ट्स देखो यार ये सीजन. एवर्टन के साथ ड्रॉ किया. एवर्टन के साथ ड्रॉ, साला बास्टर्ड्स At नेवर प्लेड home. अस अ फेवर. At home. हाँ, Oh yeah, if we don't laugh, like we're gonna cry. So let's just laugh, Yeah, man. yeah, exactly. मतलब it's so जादू frustrating क्या कि है? आप क्या है? जादू इन्होंने किया क्या किया इसने? नहीं मतलब आप 2 यार nil they got down हो. you know, yeah, somebody in the history, in the recent history has done some black magic or something. Yeah, कुछ ना कुछ किया है. I'm trying to think, was anybody involved in any witch doctrine or anything? यार जो तूने example दिए यार, these are crazy. Everton at home, Crystal Palace at home, I'm sure Southampton भी होगा ये season. Southampton be as well. No, this season. Yeah. yeah. I mean, it's I'm telling you, remarkable. United they lost. Yeah, They lost United all they of lost. United Surely usually offside thing. United. I mean, United is a great team, but But that offside. I mean, the point is when we are in the title race, तो United कुछ नहीं करता है, कभी नहीं करता है. And then जब the season जब हम नहीं है. Tarmizi bolta hai salam and bring up everyone. Not that I understand fully. Tarmizi is from Nepal. Big up Tarmizi. He says, no, I understand fully, but looking at Manas's body language and expression says everything on behalf of our fan base. Hmm. Say baat hai. We are tired. We're looking fed up of That's football. so true. We are emotionally drained this year. Drained. ये correct word है. इसलिए international break बहुत सही टाइम पे आई है. Actually गलत भी टाइम है because बॉर्नमाउथ के बाद it feels है कि पूरा 3 महीना निकला है. Hmm. बट 2 महीने ही निकला है. निधि ने एकदम सही बात बोला. लाइक सिटी ड्रॉपिंग पॉइंट्स. लाइक अब नेक्स्ट सीजन आप देखना ग्रिज बाय, आप लिख के ले लेना. हाँ. These guys will have 95 to 100 points next season. हाँ. Back to normality. We will get 92 points हाँ, and हाँ, we'll be like, "Ah!" लेकिन दक्ष हमने तो चलो हम we will start looking at the lineups and the situation. लेकिन how do you feel about this game? चल ठीक है, of course you want a result, but Yeah. looking at the trying to be neutral, trying to look at it from a footballing point of view, they may not, they definitely haven't got Foden, they may not have Haaland. I think is going to be doubtful. We have got no Thiago, no Bejitic. The rest of the midfield is useless Yeah. anyway at the moment. लेकिन कैसा देख रहा है तू? How do you feel from a footballing point of view? Of course, you want Liverpool to do something. Huh, I mean, if I keep my now in for this game Liverpool bias aside, because let's not forget we also have to come to Anfield. वो सब हटा के यार, देखो, we haven't beaten City this season, so I am hoping the other teams do a job, take away points and everything. But जैसे निधि भाई ने कहा ना, it's all about the midfield यार. They can just crowd it out. They can outplay everyone in the midfield. ही Rodri, KDB, Gundogan, Bernardo, पता नहीं किस किस को कहाँ लगा के they can just do it. और वही है, देखो, even I think when the last time at Anfield जब चल रहा था, I don't know about you guys, but general vibe जो मुझे आ रहा था was that Liverpool wasn't in great form at that point of time. किसी को उम्मीद थी तो कम उम्मीद थी कि यार देखो, कोई उम्मीद नहीं थी, है ना? And then it was the same thing, right? Salah was through, dribbling the ball, just slots it past Edison. बस यार वही होता है. And मैं तो पूरे सीजन कह रहा हूँ, to be honest, और कुछ हो ना हो, whenever it comes to big oppositions, ना, at least in the league, Liverpool just turns up, man. They just do it. कभी कुछ हो जाता है. Fabinho is in the form of his life for that game. He will do something. राइट, यूनाइटेड के अगेंस्ट क्या लग रहा था? सबको लग रहा था कि यार यूनाइटेड बहुत टफ फिक्सचर होने वाला है यार. मतलब they were favorites first time in so many years coming to Anfield. Some made them favorites, I believe, guys. 100%. एंड यूनाइटेड थी भी यार उस टाइम बहुत अच्छे फॉर्म में थी. Very few people gave Liverpool a chance, and I think Nidhi and Manas also made a video that Anfield cannot be a tactic. Anfield है, समझ रहे हैं, but देखो हमारा फॉर्म ऐसा है, यूनाइटेड का फॉर्म ऐसा है. क्या हुआ? A different Liverpool showed up that day. वही intense pressing हुई, वही बार-बार अटैक हो, But वही Daksh, the thing is ना कि those games are at Anfield again.
हाँ we have won 3 games in the league away from home. वही I can मैं वो count Aston Villa, Tottenham, Newcastle. We have won against Wolves away from home. We have won 2 in Champions League. मेरा point है कि if in April I can count the 6 away games that we have won, दिखाता है कि away from home हम struggle किए हैं. लेकिन listening to all of your points, and of course is facts. तूने facts बोला है अभी. You didn't give an opinion, you just gave facts. लेकिन facts ये भी बता रहे हैं कि we have drawn our last 2 games there, 2-2, 1-1. We haven't got beaten in there in a little while. They haven't beaten us in a little while. Of course they beat us in the league game, League Cup. दोनों sides League changed Cup. हुए थे. हाँ, League Cup Yeah. 3-2. वो They भी had chances. इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही था ना अभी First ये game after the World Cup. after the World Cup break. After the World Cup break. Yes, saying all of that. Lekin yaar, they don't beat us that much, that often. In fact, Daksh ko thoda sa dete hain na, umeed dete hain yaar. In fact, Jurgen Klopp's record, Pep's record against Jurgen Klopp is the worst against any other coach. क्या समझा? कोई है chances? मेरे को अगर पूछो ना I'll still put City 60-40 favorites, but yeah, हाँ. but I'll tell you, sorry, हमने Daksh, United sorry, against but I'll tell you one of my underrated favorite moments of the season, Chris bhai. yeah जब सिटी का गोल कैंसिल हुआ था ना, when they scored, Cancelo celebrated like a madman, and when Salah flipped him like an omelette, no, the look on his face, one of my favorite moments of the season. और भाग गया फिर हाँ? हाँ? भाग गया जर्मनी. Yes. जर्मनी का I think हो जाएगा यार. I think We listen. शुरू में तो हाँ, look, मैं सही बोल रहा है कि in the morning when I was doing the stream मैं सोच रहा था कि नहीं यार कोई chance नहीं है वगैरह वगैरह. लेकिन as time is passing, the top red is coming out in me. हाँ, if there's any team that can beat City is us. exactly यार. मैं ये बोलूंगा, even though Arsenal are the leaders and possibly or probably favorites, even though Manchester United just beat them how long ago? A couple of months ago or something, whatever. And even though Spurs, whatever, I'm telling you now, Pep Guardiola still fears or respects Liverpool more than all those other teams. वो डरता है, you know that हमारे से. I'm telling you for a fact, वो डरता है. We may not have the same force. Of course, we haven't got the same force. We haven't got the same talent or intensity, the same levels of fitness and endurance and everything. लेकिन वो still साला हमारे से ना psychologically ना डरता है. फर्क है थोड़ा सा उसमें. It would have been this game अगर हमारे लिए ना like थोड़ा सिटी के चैंपियंस लीग के इर्द गिर्द आता ना तो हमारे लिए बेटर होता. पर ठीक है, इट्स ओके, इट इज व्हाट इट इज. ऑन गेम डे प्री मैच स्ट्रीम करेंगे, हम लोग सुपर एक्साइटेड होंगे. व्हाटएवर वी फील, डर होता है बट वी बैक आवर टीम. बट आई स्टिल थिंक सिटी आर फेवरेट्स. बट वी हैव सीन ऑन मल्टीपल ओकेजन, ये सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, कि हम लोग टर्न अप करते हैं कोई गेम्स के लिए. सो आई एम होपिंग ये वन ऑफ द गेम्स है. बिकॉज मैं एक और मैं फैन बॉय नहीं लगना चाहता हूँ ग्रिस का, बट मैं ग्रिस के काफी कंटेंट आते रहता है. एंड देन यू गाइस वर डिस्कसिंग अ पैनल ऑफ 4 कि 200 odd million में इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ प्लेयर्स 250 odd million में, तो अगर 150 खर्चा करके कौन आ सकता है. वी नीड दैट मनी फॉर नेक्स्ट सीजन. आई एम थिंकिंग नेक्स्ट सीजन के बारे में ऑलरेडी. सो एवरी गेम नाउ 12 गेम जो है वाइटल है भाई. जीत सकते हो, जीतो. इफ यू कैन निक अ पॉइंट, maybe it will come in handy later on. It's a crucial game. I will not look at this game and be like, हाँ ठीक है सिटी है अबे चलो इसके आगे देख. नहीं, जीतो, कोशिश करो, और हम कर सकते हैं. निधि, even अगर we lose tomorrow, Day after tomorrow. oh sorry, day after tomorrow, Chelsea and Arsenal next in the next 5 days after that, is still
it's still in our own hands, I guess, because of the opposition we are playing. अगर हम क्योंकि or is it over? If we lose, it's over. No, I think, see, Grisbhai, if you look at those 3 games together, मैंने बोला How है कि many उसमें से points हमको we need out of those out of those possible 9 points? कितने चाहिए? Minimum. minimum 5. Minimum 5. I agree with you. Minimum 5. We cannot lose. नहीं lose Win कर one. सकते हैं लेकिन lose कर सकते हैं. Maybe we नहीं. won the वो other 2. जीतने पड़ हाँ, जाएंगे. अगर 2 जीत गए तो फिर you win, Yes, get exactly. 6, which is even better. But minimum 5. मैं भी यही सोच रहा था. 5. I think the best way to tackle a difficult run of 3 games is you have to win the first one. Yeah, देखो, अब I think ना Liverpool के लिए भी it's not that they are in it's not like they're in 13th and there's nothing to fight for this season and it's बहुत बड़ी fight है यार. Tottenham में manager नहीं है अभी मतलब and they are very very likely to slip out of 4. अब आपका सबसे बड़ा दुश्मन is Newcastle जो आपसे I think कुछ point आगे है. हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद है. वो भी है. नहीं, आई थिंक यार टॉप 4 ब्राइटन, लिवरपूल, न्यूकासल यार तीनों में से कोई भी ले सकता है. फुलम में मित्रोविच इज गॉन फॉर द सीजन. ठीक है, तो आई डोंट थिंक उनका भी काफी डिरेल हो ही जाएगा. बट यार न्यूकासल, लिवरपूल, ब्राइटन में देख रहा हूँ ना 42, 42, 47, न्यूकासल ऑन 47. तीनों ने 2 से 3 गेम कम खेली हैं. स्पर्स आर ऑन 49. There are stakes to do this, yeah. And Champions League in this horrible season for Liverpool also. आप लोगों के खुद के स्टैंडर्ड से इतना खराब सीजन है, उसके बाद भी you guys come fourth. Absolutely insane, यार. काफी insane recovery होगी. And more important than anything else, it gives Jurgen Klopp the absolute perfect platform to rebuild and tackle the next season. Oh, वो तो जरूर आएंगे हम वापस. वो आएंगे. जरूर आएंगे हम वापस. Yeah. We will come back. So लेकिन stakes वही तेरी बात कि even against this disastrous season, if we still manage to finish top 4, बहुत बड़ी बात होगी. बहुत बड़ी बात. Shoria says if Liverpool loses to City, then it's still possible. There's always a chance. But if they lose to both City and Arsenal and somehow drop points versus Chelsea, then it's curtains. हाँ बिल्कुल 100% of course. right. That's completely right, of course. लेकिन I know तूने बोला कि Tottenham are managerless, blah blah blah, but I don't think. I still think for me, they have got a very good chance. Very good chance. The fixture list is they're also 7 points kinda, behind. They're 7 points ahead of us, but we have 2 games in hand. Yeah. And those 2 games are Chelsea away, and I can't remember the other one. I think it's Leeds at home. Fulham at home. We've lost against Leeds. The issue is that आप लोग यही बात करो ना कि how many points do we need out of the next 9. हमारा रियलिटी है कि हम ये निकाल लेंगे शायद से 5-6 पॉइंट, बट आगे जाके हम लोग ये सीजन जैसे चल रहा है आगे जाके we will kick ourselves in the foot. Like we'll do something like that. This season not surprising beating City. Won't surprise me if you beat City 3-0 and then end losing 1-0 to Chelsea. मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सीजन वैसा रहा है. सो बट आई एग्री विद यू गाइस. 5 मैं तो 6 बोल रहा हूँ. मेरे हिसाब से 6 पॉइंट्स चाहिए आउट ऑफ 9, व्हिच गिव्स अस बहुत मुश्किल. आई नो, व्हिच गिव्स अस 3 पॉइंट्स का लीवे मेरे हिसाब से इन द 30 रिमेनिंग. बहुत मुश्किल यार. बहुत मुश्किल. स्कल शॉट बोलता है ब्रो व्हाई इज लिवरपूल नॉट मेकिंग एनी ट्रांसफर्स. यार विंडो नहीं ओपन इसलिए. जब विंडो ओपन होगा ना तो we will get our business done in the first few weeks. Definitely. Next to बोल रहा था well, we were speaking about Haaland and Man City के chances and this and that. Haaland may be a doubt, लेकिन हम सोच रहे थे, मैं जब एजेंडा बात कर रहा था कि क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे. A lot of people are speaking about Saka for player of the season. क्या ख्याल है तेरा? Yeah, he has been amazing. Definitely for any Arsenal fan, you ask him, he's definitely the player of the season. There are 2 things which work against Saka in the player of the season. One, Haaland has had a monster year. ऐसा goal scoring record तो hello बाबा कैसे हो? बस बढ़िया भाई. बाबा आ गया यूके से आ गया.
हाँ वो तो 22 को ही आ गया था। अच्छा लगता है तू अभी आया है। 22 को आया था। Most हाँ। welcome, of course. Baba Thank is you, here, thank you, Chris guys. भाई। Most welcome. हम्म। Sorry, Daksh. हाँ जी, नहीं कोई नहीं। तो मैं कह रहा था कि साका के अगेंस्ट ना दो चीजें वर्क करती हैं और प्लेयर ऑफ द सीजन। द नंबर वन इज हालैंड had a monster scoring season. ऐसे numbers किसी ने नहीं देखे. He's probably going to shatter records and all of that. The second also thing is recency bias. He's been in great form throughout the season, but Rashford जो है, Rashford has been incredible form since the World Cup. तो एक ना वो recency bias आ जाता है कि आपको याद ज्यादा क्या ताजा है. साका हैज बीन डूइंग इट थ्रू आउट द सीजन. कभी कभी गेम्स में उसने चलो कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट रैशफोर्ड ने ऑलमोस्ट हर गेम में गोल मारा है, और क्या क्या आउट ऑफ नथिंग गोल मारे हैं. मतलब हिज ही इज बेसिकली ड्रैगिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड प्राइमरीली, और भी कंट्रीब्यूटर्स हैं ऑफ कोर्स, बट रैशफोर्ड ने बहुत अच्छा करा है. सो आई थिंक साका के सबसे बड़े कंटेंडर्स होंगे रैशफोर्ड एंड Haaland, but most likely Haaland's going to take it. Young player of the year though, Saka can get. You know what, Chris भाई, first of all, I think आप ना नहीं दे सकते हो player of the season किसी और प्लेयर को जब दूसरा प्लेयर आपके प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, राइट? एंड अगर आर्सेनल में से ही किसी प्लेयर को देना है ना प्लेयर ऑफ द सीजन, आई वुड गिव इट टू ओडेगार्ड ओवर साका. मैं यही पूछने वाला था. तूने बोल दिया कि you can't give it to anybody else. बाबा की तरफ से आते हैं. Can we give it to anybody else? For example, Arsenal win the league title. Saka gets, how many league goals is he on now, Daksh? I think he's on 11 goals and 10 goals, I think. 11 goals and 10 assists. Let's say he gets 15 goals, 15 assists. ठीक है? And they win the league. Haaland scores, I don't know, क्या उसका सीन है अभी? Has he reached 15,000? But you know what I mean? चलो 40 मार दिया. चलो 40. लेकिन they don't win anything. क्या तुम दे सकते हो साका को? Is there a written rule? निधि ने तो बोल दिया कि there's a rule. उसने तो कानून बना दिया कि you can't give it. I disagree. But Chris bhai, that's how a lot of our boys have been denied player of the year, Ballon d'Or. Not just our boys, a lot of other players. A lot of boys, but let's change it. तो ये rule अभी क्यों change हो रहा है? मतलब why? Guys, let us know in the chat if you think, let's just say Saka scores 15 goals, 15 assists, and they win the league title in a crazy season. They weren't supposed to win it. Man City bought Haaland for a record fee. They were supposed to win everything with Haaland. He scores the most goals, but they don't win anything. क्या बाबा क्या कर सकते? क्या इसको में कोई written rule? There's no written rule, I believe. मुश्किल है अब. मुश्किल है. हाँ, मेरे हिसाब से तो हालैंड को ही मिलेगा. जैसे निधि भैया ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेयर जब आउट परफॉर्म कर जाता है, तो मतलब यहाँ पे आप प्लेयर ऑफ द सीजन की बात कर रहे हो. अब अगर उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि उसने आपको लीग जिताई है, तो डेफिनेटली देन आर्सेनल का कोई प्लेयर ओडेगार्ड या साका में से कोई कंटेंडर बन जाता है. बट अगर कोई बंदा ऑल टाइम प्रीमियर लीग रिकॉर्ड ही तोड़ रहा है, तो वो एक उसके फेवर में बहुत बड़ी, मतलब वो दैट प्लेस अ लॉट इन हिज फेवर. अब 17-18 सीजन में जब साला ने रिकॉर्ड तोड़ा था, तो उस साल कौन था प्लेयर ऑफ द ईयर? याद है किसी को? साला ही था. तो हियर्स योर आंसर. I think I'm convinced कि अगर उसने प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड तोड़ा ना, then I think he will get it. लेकिन if he just ends up the top goal scorer, then I don't think necessarily he should get it. Does that make more sense? 4 गोल ही तो चाहिए तुम्हारी. 4 गोल तो चाहिए, लेकिन अभी खबर आ रही है कि maybe he is out for 2-3 games in the league. वो एक गेम ही चाहिए उसको. एक गेम ही काफी है. वो एक नॉटिंगहम के अगेंस्ट होगा, कोई ऐसा गेम, कोई ऐसे साउथहैम्पटन वगैरह के अगेंस्ट कुछ होगा, मार देगा उसमें 5 गोल. ये चांस है. Player of the year can go to Saka. मुझे तो लग रहा है साका इज अ शो इन फॉर यंग प्लेयर ऑफ द ईयर. वो तो है ही है. वो तो पक्का. वो तो you might as well give him the trophy now. प्लेयर ऑफ द ईयर भी आई थिंक हालैंड ले जाएगा. आई थिंक हालैंड की डबल स्वीप हो जाएगी.
चेल्सी हो जाएगी। यार देखो, आई थिंक अगर आपको ऐसे परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सीजन पे नहीं मिलेगा ना, प्लेयर ऑफ द ईयर भी, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। Saka is young. I won't be too disappointed if he loses out on Player of the Year this year. Just because देखो हैरी केन का भी इतना बढ़िया सीजन चल रहा है. Let's be honest. Harry Kane is also having a great goal scoring season. But नहीं यार, Haaland, young Player of the Year, Haaland is in contention. I think they'll give Player of the Year to Haaland and young Player of the Year to Saka. मेरे को तो लग रहा है यही होगा. ऐसे ही फेयर होगा मेरे ख्याल है। Yeah. मतलब you can't like I think that was it. Like अगर आप प्रीमियर लीग रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हो और अगर आप वो सीजन नहीं जीते, अभी ये प्लेयर ऑफ द सीजन है ना, टीम ऑफ द सीजन नहीं है ना, लाइक आपकी ये अवार्ड ही इंडिविजुअल है। अभी ये वैसी बात है ना कि आपको बेस्ट एक्टर मिल गया जोकर के लिए, बट दैट डजंट मीन ना जोकर बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर है। इट्स लाइक दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको बात ये है कि सचिन तेंदुलकर 2003 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, बट इंडिया वर्ल्ड कप थोड़ी जीती थी। Exactly. But he scored shit load of runs, 670 कितने 40 something, so he had to get that award. वो वाली बात है। तो कभी-कभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है कि आप उसको वो नहीं कर सकते। और पहली बात तो फंडामेंटल फ्लॉ पता है क्या है इस पूरे डिस्कशन में, कि एक टीम स्पोर्ट के लिए आप इंडिविजुअल अवार्ड की डिस्कशन कर रहे हो। तो फंडामेंटल लेट्स नॉट हेट देयर बाबा। नहीं तो वो बहुत सब्जेक्टिव है, वो बहुत सब्जेक्टिव चीज है वो। अब ये तो बाबा ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स। मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत सब्जेक्टिव चीज है ना यार इसमें, इसीलिए तो लड़ाइयाँ होती हैं। ये सिर्फ एंगेजमेंट और उसके लिए किया जाता है। बट हाँ, मेरे हिसाब से हालैंड को मिल जाए चाहे काय हैवर्ट्स को मिल जाए, दक्ष के लिए तो प्लेयर ऑफ द ईयर साका ही रहेगा ना, वो थोड़ी चीज। Exactly. So if we use that criteria foundation sub for manager of the season, does it mean the same? How do you judge the manager of the season then? अगर क्योंकि player तो आपने बोल दिया कि if he smashes the record for the goals, that's him. ठीक है? Manager का क्या criteria है? कौन है candidates? So who's the candidates? Who's the candidates? Arteta, Zerbi, Pep. Eddie Howe. How Pep? Pep? And if Newcastle finishes the top 4, then Eddie Howe. नहीं, Pep कैसे आ गया conversation में? किसने बोला Pep? Stand up. If they win the league. They win the league every year. ये तो वही बात है ना, ये NBA टर्म्स में ना कि अब लेब्रॉन जेम्स एवरेज इज अ ट्रिपल डबल एवरी सीजन, इसलिए वो MVP रेस में आता ही नहीं है। आप you can't take I'm not saying for many people Pep greatness हो सकता है, but you can't, या कोई लोग के लिए नहीं है, but आप you can't take greatness for granted just because वो वापस लीग जीता in a season which has been tough for many teams। हाँ, बायर्न म्यूनिख स्ट्रगल कर रहा है जर्मनी में, रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रहा है स्पेन में, मैन सिटी का ये स्ट्रगल सीजन है भाई लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द स्ट्रगल सीजन, और वो स्टिल टाइटल जीत सकते हैं। So we can't. I think if he wins the league, he there is 100% shot that he wins the manager of the match. I don't think so. Yeah, same. I think no matter what happens, Arteta will take it. They'll give it to Arteta for sure. 4th, 5th से team first. Relegation जब आप सब लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म में प्रीव्यूज किए, प्रेडिक्शंस किए, सही बताना, सच बताना. Otherwise, I will stalk all of your social media and I will find the truth. ठीक है, झूठ नहीं बोलने का. Which teams did you have for relegation? I had Bournemouth, Southampton, and Leeds. Fulham नहीं था? No. अच्छा, you're not part of this conversation. भाग जा. I had Fulham. You had Fulham. I had Fulham. मुझे वीडियो देखना तो मेरे को बिल्कुल तू जरूर Fulham बोला होगा, जरूर. नहीं, मैंने तो Fulham बोला था at the start of the season. If you are a Chelsea fan, you must have said Fulham. Your neighbors, West London neighbors, you have to say so. 22-23 Premier League predictions. Fulham बोला होगा. आपने क्या बोला था ग्रेस भाई? Fulham. I think लेकिन बात करने का मतलब Fulham Forest और
कुछ तो था आई थिंक. नहीं, ओ लाला, गल पूरी सुन. अच्छा. The reason why I'm saying is Fulham. Look at Silva, the job Silva is doing. I think 90% of people or fans said Fulham to go down straight away. लीड्स Fulham. बोर्नमथ फुलम बोला था मैंने. But मुझे Grace पता था, भाई, बाबा, I know you but said Grace, Fulham. but Grace भाई, अगर relegation से बचाने पे manager of the year मिलता तो Sean Dyche would have no room in his living room. Nidhi, he's not stopping them from relegation, bhai. अरे मैं इस साल ना मैं बोल रहा हूँ how many times He's in contention for Champions League stroke Europa. Sean Dyche I'm talking about. मैं सिल्वा की बात कर रहा हूँ यार. नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं यार ग्रेस भाई, मतलब देखो अगर आर्सेनल लीग जीतती है तो सिल्वा को नहीं दे सकते हो आप, मतलब कम ऑन. अच्छा रिवर्स क्वेश्चन. मुझे रिवर्स करो. आई थिंक मेरे हिसाब से किसी ने आर्सेनल को टॉप 4 में नहीं बोला था. हाँ. तो अगर आर्सेनल लीग जीत गया तो फिर आई थिंक आर्टेटा की अकॉम्प्लिशमेंट इज वे बिगर देन सिल्वा की. वो तो क्लियर है, 100% agreed. या लेकिन हम कैंडिडेट्स नॉमिनीज की बात कर रहे हैं. सो ठीक है, आर्टेटा इज द क्लियर फेवरेट, जस्ट लाइक आप लोगों ने बोला हॉलैंड इज क्लियर फेवरेट. ठीक है, आई एम सेइंग देयर इज अ बिग केस फॉर समवन लाइक सिल्वा. बिग केस. 100%. यार हाँ, क्रिस वाइल्डर वाज गिवन मैनेजर ऑफ द ईयर ऑफ द सीजन. नहीं, क्लॉप को मिला. लिवरपूल जीती थी उस सीजन. But he was given a close, like high grades. The managers of the month, I don't think. हाँ, manager of the season तो नहीं थी. The same thing. I think. निधि ने बोला एडी हाउ. लास्ट सीजन क्लॉप को मिला था, although Liverpool didn't win the title, but उससे पहले जो नॉन लीग विनर मैनेजर जीता था, that was Tony Pulis in 13-14 क्रिस्टल पैलेस के लिए. So ये बोल रहा ना कि manager of the season is about who managed the resources at his disposal the best. So अगर सिल्वा की टीम देखी जाए, सिल्वा का बजट देखा जाए, everything about Silva suggest he done magnificent. Newcastle को ये भी बोल सकते हैं कि Newcastle, all right, no problem, Eddie Howe has done a brilliant job, magnificent job, लेकिन उसको resources भी दिए गए ना. एडी हाउ अगर ट्रॉफी जीत जाते सीजन तो उसको yes. और एक और चीज है क्रिस भाई, अगर इस बार भी टाइटल रेस लिवरपूल और सिटी में होती ना, और थोड़ी कम पॉइंट्स वाली होती, जैसे हमेशा तो 97 98 चली जाती है, इस बार 80 81 पे डिसाइड हो जाता, तो ऐसे मैनेजर्स को मिलता है फिर कि ये जैसे किसी ने जावी लिखा है, मतलब प्रीमियर लीग में जावी को अवार्ड दे, मतलब कुछ भी हो रहा है हमको अवार्ड दो. यार अगर पॉटर ने टर्न अराउंड कर लिया फिर कुछ नहीं हो रहा टर्न. बाबा आप जाके सब कुछ टर्न अराउंड हो गया है. वैसे व्हाई मार्को सिल्वा, व्हाई नॉट थॉमस फ्रैंक, दिस भाई सेम लॉजिक. हाँ. Oh, this is a very good shout. If Brighton reach the top 4, do you know how crazy that is? Brighton can win the FA Cup. If Brighton win the FA Cup and finish top 6, then Brighton win the FA Cup because they have to beat Man United and Man City most probably. To win the FA Cup. It's a long shot, but it's not an impossible shot. And if they finish the top 6 like they're looking likely, Zerbi deserves it, yeah. Yeah. 100%. And what a blessing in disguise na for Brighton. मतलब अभी तक short term they lose their big man, the key man, and they replace him with someone who is just as good as him. Elevated them even more. Elevated them, but long term में तो let's be honest, Chelsea will blossom. But in the short term क्या किया यार उसने, like remarkable. But मेरे को बुरा लग रहा है कि next season साला they are going to lose out on Caicedo, McAllister, and Mitoma. I don't think so. वो ऐसी टीम है, they shown the owner is such a पूरा gangster निकला है यार. He's a gangster. उसने बोला you can't bully us. Grace bhai, we can debate as much as we want. Honestly, it's going to either Pep or Arteta.
नहीं पेप को नहीं मिलेगा, मान ले मेरी बात, पेप को नहीं मिलेगा, even if they win the league पेप को नहीं मिलेगा. I think it's going to be I think it's going to be Arteta or one of the guys that we've mentioned, depending on how they finish. पेप के लिए कितना अनफेयर है ना कि उसको डोमिनेट करना पड़ेगा लीग जीतने के लिए, मतलब वो वैसे क्लोज टाइटल रेसेस में नहीं मिलेगा उसको. लेकिन बाबा look, it's also true, if he's got every player is worth 50 million in his squad and he's got 26 of them, right? ठीक है, नहीं ठीक है, look, also he's been getting 96 plus points, 95 points. If suddenly he gets a season, अब ग्रिस भाई ये तो वो वाली बात हो गई कि एक टॉपर है स्कूल में जिसके घर वाले वेल टू डू हैं और एक गरीब बच्चा है जो 6th आ रहा है क्लास में, तो गरीब बच्चे को वो दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड. नहीं जरूरी नहीं है दो उसको, if he deserves it दो ना. New analogy. मतलब ये तो थोड़ा वो if for example look his average सोशियो इकोनॉमिक उसमें जा नहीं look no if he for example if he gets 89 points this season, 88 points this season to win the league, that's not a bin, and he doesn't win the Champions League, he doesn't win anything else, I don't think he's gonna win the league. Like देखते हैं मुश्किल है ये इस बार. ये बाकी कॉम्पिटिशंस का फर्क पड़ता है प्रीमियर लीग मैनेजर ऑफ द ईयर? मुझे तो नहीं लगता. मतलब मान लो पेप एफए कप और चैंपियंस लीग जीत जाए लेकिन लीग में सेकंड आ जाए तो फर्क पड़ेगा उससे कुछ? नहीं. I think FA Cup maybe, but not the Champions League. Baba spending too much time with Nidhi Bhaiya. बाबा ने भी एनालॉजी दी ना अभी, तो इसलिए. लेकिन चलते हैं आगे. We talk about Haaland being the player of the season. Must be. Does he? Conte को दे दो. Conte को दे दो और मामला खत्म करो, ठीक है? You get Potter को दे दो. Disaster of the season. Disaster of the season. Potter को दे दो यार, मैं तो कह रहा हूँ. Potter को दे दो. नहीं, actually, if you say disaster of the season, ठीक है? Klopp, Conte, Potter. Managers कोई है? हाँ. Brendan Rodgers. नहीं यार. हाँ. Yeah, No, they can be relegated. definitely Why not- nomination. why not- Definitely why not nomination. Lampard? Definitely. Why not Lampard? हाँ, Lampard also is a good shout. Lampard. Gerrard? Gerrard's also a good Gerrard? shout. और वो अपना Bruno Lage is also a good shout. लेकिन वो तो he was Wolves, yeah. I think David Moyes good shout, yeah. David Moyes 100% good shout. 100%. Lekin I think it's fair to say Conte. अगर sack हो गया ना, हाँ, हाँ, sack हो गया. हाँ, officially sacked. लेकिन disastrous manager of the season. That's because Grace bhai, that's because Conte is so explosive. Like it's like burning my finger and then burning my finger and making a noise about it. That's because Conte, it's a lot of noise around it. Like 20 years, no history, whatever. This owner is whatever. A lot of people. So recency bias also. क्योंकि वो अभी हुआ है, तो अभी हम ज्यादा बात कर रहे हैं उसके बारे में. यार बायस की बात कर रहे हो. यार बायस की बात कर रहे हो. ये देखो ना कपिल ने क्या बोला. Ten Hag in his first season, win Carabao Cup, FA Cup, top 3. हमने किसी ने हमने Ten Hag का नाम ही नहीं लिया मेरे ख्याल है. I think बाबा ने लिया था Ten Hag का नाम. हाँ, मैंने लिया था. But that won't be enough because again वो resources at disposal की आप बात कर रहे हो ना उस logic में. मतलब they have spent money this season. It's Anthony not लाया, Casemiro लाया. It's not a bad achievement, but वो जो भी लीग जीतेगा, I think that will weigh so heavy. Arteta winning the league is much more of a bigger achievement than Ten Hag coming in, finishing third and winning those 2 cups. 100%. उसमें तो वो doubt ही नहीं है. मेरा सिर्फ doubt, I agree with everything you guys said. I just don't think Pep will win it if they win the league. I still think और कोई आदमी जीतेगा. देखते हैं. I think जो लीग जीतेगा usually उसको ही मिलता है. आर्टेटा मेरे हिसाब से आर्टेटा को ही मिलेगा. But यार एक ब्राइटन की बात कर रहे थे ना. I wanted to ask a question on another show. Someone asked me and I thought it's a very good question. It's interesting. Yeah, Brighton is a team that निधि बोल रहा था कि all the players are going to be sold, whatever, blah 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 blah. ठीक है.
If you can pick one player from Brighton right now, who you guys picking for your teams? Caicedo, 100%? 100 for my team. Caicedo. McAllister for mine. McAllister for Arsenal? Come on, क्या Baba, another winger. Go for Mitoma. नहीं Another winger. मिटोमा नहीं बोलूंगा. he's gonna be, I think he's Robert you know- Sanchez, Baba, Robert Sanchez. Actually, not a bad shot. not a bad shout actually. Estupinan भी हमारा है. ही प्लेयर है यार वो, तो मैं किसी को नहीं लूंगा. लीवाई कॉलवेल हमारा ही वैसे Levi भी आएगा नेक्स्ट. You don't need a centre back. हाँ बट जो हमको चाहिए वो है नहीं. काइसेडो ही चाहिए फिर तो. मैं भी काइसेडो ही बोलूंगा. हाँ दुआ कांटे आ जाएगा और क्या. हाँ. निधि Caicedo ही तूने क्या बोलूंगा. बोला? Caicedo. But a lot of people say McAllister, and McAllister is great. But I think Oye, Chelsea. Ivan Ferguson, yeah. Hmm. Ivan Baba, Ferguson is a good side. सोच कुछ क्या? सोच. You need a goal scoring young striker everything. बस उसको Ferguson. 9 जर्सी मत देना. वो 18 साल का है. वो चेल्सी तो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट देती है. लोन पे चला जाएगा यार वो. यंग ले लिए. दो यंग है ऑलरेडी. वो डेविड फोफाना और अरमांडो ब्रुआ. Yes. और यंग नहीं चाहिए. अब प्रूवन चाहिए. तो फिर ले आओ लुकाकू को वापस फिर और क्या. अब So, हो गया. Chris Bale, Good, great. proven good या bad? या proven. अब इस विंडो में तो मुझे नहीं लगता कोई आएगा. निधि तू क्या बोल रहा था मैकैलिस्टर के बारे में? मैं बोल रहा था कि मैकैलिस्टर बहुत अच्छा प्लेयर है, बट जैसे हम खेलते हैं ना, काइसेडो विल बी, मतलब he'll fit in like a glove. Game changer. Yes, and he's so young, he can give you so many years. So for my McAllister is great, but I think उसके behalf में opinion थोड़ा skew हुआ है because of the World Cup. Caicedo has been playing well for a longer period of time. My pick is Caicedo. They got so many stars. So many stars. If somebody's looking for a solid, reliable centre back of the last few years, Lewis Dunk has done a tremendous job. Yeah. But Grace If bhai, somebody is looking for a left back who's come in and taken the Premier League by storm, look at Brighton. Estopinian, that's how you spell his name. yeah. Ferguson, Pascal Gross. Look at the job Trossard Suleiman. has done. Look at the job Trossard has done for you guys. Yeah. Webster as well. Somebody saying, "Dekh teri taraf aate hain, Arsenal." Yeah. Of course, your eyes and concentration or sab kuch will be on Etihad in the morning, but then afterwards you got to focus on you. 100%. I think you've got Leeds at the right time. Yeah. They've got injuries, and you guys are in a good momentum. Yeah. No way any shocks, right? Hopefully, yeah. Neoto is not there for Leeds, if I'm not mistaken. I think Tyler Adams is also not there. So these are two good players for Leeds, yeah, who are missing. For us also, though, let's say Saliba is not there. Saliba has not been seen in training pick, so that's a huge loss. So another Rob Holding game, which that should be as little as possible. But ठीक है यार, I think बाकी players के पास इतनी quality है, manage कर लेंगे. The best thing is international break से कोई injure होके नहीं आया. The worst thing is Saka ने दोनों games में 90 minutes खेले, Odegaard ने दोनों games में 90 minutes खेले, Trossard ने 70 minutes in both games ऐसे कुछ खेला था. जर्मनी के अगेंस्ट 70 मिनट्स खेला था उसने. तो है यार, टायर्डनेस हो सकती है, बट नहीं, आई थिंक सही बोला आपने, लीड्स बिल्कुल सही टाइम पे आई है. एंड देखो, एज मच एज आई वांट टू लुक एट, चलो यार काश लिवरपूल हम पे एक फेवर कर देन एवरीथिंग, ट्रूथ इज वी आर what 8 points clear with a game in hand. We have to do our job, right? Max Wober, yes, Wober is also really out. Yep. Wober भी बहुत अच्छा defender है उनके लिए. So yes, it's probably the best time to play Leeds, but Leeds has been one of those teams जिसने हमें trouble दिया था earlier in the season. We barely escaped with the skin of our teeth against Leeds. तो यार वही करना है यार. Just do our jobs, man. No matter what happens. अगर Liverpool do something for us, let's say City or make City drop points, फिर भी हमें जीतना है. If they don't do it, if City still win, फिर भी हमें जीतना है. So we have to do our job, yeah. And difficult matches are coming. हाँ जी. मैं बोल रहा हूँ लिवरपूल के गेम के लिए just go for a run, keep your phone in your house. वो 2 घंटे
भाग में जा, come back and see what happens. Don't make yourself go through Or that. not. At the end, you know that वो 2-3 टाइटल रन्स में oh shit. Anyway, sorry, हाँ. हाँ नहीं, मेरा तो था कि just do a job man. लीड्स है, उसके बाद आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक और गेम है बिफोर द डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर स्टार्ट यार. एनफील्ड पे जाना है और भी डिफिकल्ट गेम्स है, सिटी के साथ खेलना है. So just get as many points in the bag as possible here, so you have a comfortable cushion when you face the big teams like Liverpool and City and Chelsea and everyone. कोई है चांस लीड्स का कोई शॉक? निधि मानस बाबा कोई है? इज स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस फिक्सचर राइट? नो surely 3-0 4-0 3-0 4-0 टाइप. I think it's straightforward. उतना 3-0 4-0 वाला नहीं लगता मुझे. आई थिंक वही क्यों होगा. नहीं? नहीं यार ग्रेस भाई, जब भी हमने सोचा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, वो बॉर्नमouth 2 सेकंड में गोल मार देती है. ठीक है, विला That's your- हमें 97th that's मिनट your तक 2 पे. हाँ That's your PTSD, but this one is straightforward. I know, but मैं वही कह रहा हूँ, it's not going to be 3-0 4-0. I think it might be comfortable, but it would be maybe a 2-0 or a 2-1 for me. I think that is fine. देखो, Daksh, you haven't got a midweek fixture this week. yes, we don't have a midweek fixture. So That is, so straight to Liverpool game after this. yes, wow. straight to Liverpool after this. एक Yellow. second, check Yellow. कर ले. Hey, yellow. Shuriya bhai. Leeds next week Zindabad. Anfield, उसके बाद Southampton, then West Ham and then City. Yeah. Wow. So if you get 9 points out of the 12, and if you manage the City game somehow, the title is yours. I think जो next 4 games में से अगर हमने 10 निकाल लिए, let's say somehow we get a draw at Anfield and we get a draw at Etihad, then it's done. Then I think it's done. Yeah. Might agree. I think Anfield and City वाला गेम navigate करना है, हारना नहीं है दोनों में से, दोनों नहीं हारने और बाकी जीते. अगर ये हो गया then it's done. I think then it's fine. बाबा की तरफ आते हैं. Whether he likes it or not, we have to speak about your club. Tell us about the last result. Last result was 2-2 क्या था? draw at Everton. I was in the Matthew Harding stand watching So- that equalizer being scored in front of my very so eyes. first and foremost, tell us how was your experience? Because I know you must have spoken about it on other shows and everything, like, and I haven't. कैसा experience था? एक्सपीरियंस और- तो बहुत ही जबरदस्त था. मतलब वैसा तो कभी, मतलब ऐसा कभी नहीं फील हुआ जो वहां पे फील हुआ. मतलब द फीलिंग ऑफ गोइंग इनटू द स्टेडियम, देन वाचिंग योर टीम प्ले, चैंपियंस लीग वाला फिक्सचर, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना पूरा. मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम था यूके में, तो इट वाज मैजिकल फॉर मी. और आई वाज देयर फॉर 15 डेज और कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला मुझे. तो बहुत मतलब अमेजिंग था मेरे लिए. तो मतलब ऐसा तो मेरे को कभी महसूस ही नहीं हुआ. मतलब एवर्टन वाला मैच भी जब मैं घर आया तब मुझे दुख हुआ, अरे यार ड्रॉ हो गया. वरना जब तक स्टेडियम में थे, बाहर भी घूम रहे थे स्टेडियम के, बातें कर रहे थे लोगों से, तब तक भी इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा था. बिकॉज जब आप स्टेडियम में जाते हो और पहली बार देख रहे हो आप अपनी टीम को, तो आई थिंक उस टाइम हार जीत मैटर ही नहीं करती है. बस ये होता है कि अरे यार मेरी टीम खेल रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं मैच देख रहा हूँ स्टेडियम में बैठ के. बहुत इमोशन होता है, बहुत फीलिंग होती है. आई कैन इमेजिन. सो बहुत मुबारक आपको उस बात का. Thank you, लेकिन thank you. कमिंग बैक टू योर टीम, उसका भी मुबारक देना चाहिए. I mean, look, at the end of the day, you still got a point. Maybe a month ago you'd have lost that. The small steps, yeah. Grizna is trying to be as nice as possible. नहीं, I'm being honest, yeah. मतलब ये वाली बात है कि Did you deserve? Are you seeing any difference? कोई difference नजर आ रहा है performance में? Look, results are good. Look, हमने बार-बार बोला है, results are going to be up and down. It's going to be a roller coaster, up, could be down, no consistency until the end of the season. For same as us and same for you. The only two consistent teams right now is Arsenal and City. ठीक है? लेकिन we have been saying, you want to see something. You want to see fight. You want to see desire. You want to see consistency, style of play. कुछ नजर आ रहा है. You've managed to get through to the Champions League quarterfinal, yaar. So, is there something to be positive about? Surely, the last time we spoke, मेरे ख्याल है कितना 4 weeks ago. मतलब ठीक है. अगर आप ऐसे देखोगे तो पिछले मतलब
3 मैच में 2 विन और 1 ड्रॉ है, तो ठीक है, इट इज बेटर देन नो विंस इन फॉरएवर। वो तो ठीक है, वो वाली बात ठीक है। बट डॉर्टमंड गेम तो चलो, वो तो मैं स्टेडियम में भी था। चेल्सी ठीक खेली वो गेम, अच्छा ही खेली, बट डॉर्टमंड वर वेरी पुअर दैट डे। वो तो तुझे मतलब बोला था, दे वेरी ओवररेटेड। बहुत बहुत गंदा खेली डॉर्टमंड, तो बहुत ही गंदा खेली। मतलब एमरे चैन वाज देयर बेस्ट प्लेयर उस रात को, तो साब लगा लो। हाँ, तो वो वाली बात है। लेस्टर वी वर गुड, जो 3-1 हम जीते थे। हाँ। एवर्टन अगेन, मतलब इट्स चेल्सी के केस में पता है क्या हो रहा है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक। एवर्टन वाली परफॉर्मेंस वाज बैड यार, बहुत ही खराब। मतलब वो स्टेडियम में, मतलब फ्रस्ट्रेशन में महसूस कर रहा था लोगों की, जो मेरे पास बैठे थे ना, वो कह रहे थे भाई क्या चल रहा है ये, और मतलब और वो देखते ही बन रहा था किसी भी तरीके का कोई मतलब आपको एनर्जी नहीं दिख रही थी उस मैच में। वो इसलिए था कि भाई वही प्लेयर अब खेले जा रहे हैं बार बार, या जो भी है। बट मजा नहीं आया यार, एवर्टन वाला मैच मजा नहीं आया। मतलब ठीक है, जीत जाते तो भी मैं ये कहता कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। वो एक काय हैवर्ट्स की पेनल्टी से डिसाइड होता मैच, अगर वो होता भी तो। और वो भी कैसी, मतलब था फाउल नहीं था, कंटेंशियस अगेन। मतलब ऐसा नहीं था कि हम अनलकी थे बहुत ज्यादा, कि अच्छा यार 5 क्लियर कट चांसेस बनाए और पिकफोर्ड ने सेव कर लिए, इस वजह से हम रह गए। नहीं तो मतलब वन ऑफ दोस डेज था। वन ऑफ दोस डेज नहीं है यार ये, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन। अब मैं वो डिस्कशंस में भी नहीं पढ़ना चाहता कि स्क्वाड बहुत ब्लोटेड है और पॉटर को टाइम चाहिए और ये वो है। आपने कर लिया ना आइडेंटिफाई, अपने 14-15 प्लेयर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए है ना। अब मुझे तो एक बात ही समझ नहीं आई कि आप मुद्रिक को लेके ही नहीं आ रहे हो यार। आप डॉर्टमंड वाले गेम में उसको लेके नहीं आए, आप पुलिसिक को लेके आ गए। आप एवर्टन वाले गेम में उसको नहीं खिला रहे हो। लेस्टर वाले गेम में जब वो स्टार्ट किया, ही वाज मतलब काइंड ऑफ योर मैन ऑफ द मैच। उसका असिस्ट वगैरह भी आ गया उस मैच में, और मतलब ही आल्सो स्कोर्ड अ गोल जो मार्जिनली ऑफसाइड हो गया। तो ये कुछ डिसीजंस मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। मतलब पुलिसिक को आपने स्टार्ट करा दिया उस वाले गेम में, अब क्या है? मतलब आप ऐसा नहीं है ना कि मुद्रिक रजिस्टर्ड नहीं है चैंपियंस लीग स्क्वाड में, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है टू परसिस्ट विद पुलिसिक की चलो ठीक है, बड़ा मैच आ रहा है तो मुझे पुलिसिक को खिलाना ही खिलाना है, ठीक है। आप बदिया शीले को खिला रहे हो, आप कुकुरेला को रेस्ट करा दिया आपने। क्योंकि जो आप, मेरे हिसाब से तो अब से लेके रियल मैड्रिड वाले मैच तक सेम टीम खेलनी चाहिए सारे मैचेस, जिससे केमिस्ट्री है। कुकुरेला का लेफ्ट सेंटर बैक खेलना चाहिए अब से लेके रियल मैड्रिड वाले मैच तक, क्योंकि वही खेलेगा, क्योंकि और तो आपके पास है नहीं ना डिफेंडर खिलाने के लिए। थियागो सिल्वा तो आएगा नहीं जब तक वापस। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब मेरे को ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये जकारिया को आप खिलाते नहीं हो, आप कांटे फिट होके आ गया उस दिन, फिर भी आपने उसको टाइम नहीं दिया। तो भाई जब वो फिट नहीं है बंदा 5 मिनट भी खेलने के लिए, तो उसको बेंच पे क्यों डालते हो? तो कांटे ने तो आना ही था, कांटे ने तो फिट होना था। यू प्लेइंग लिवरपूल नेक्स्ट वीक, सो कांटे तो हमेशा जो नहीं, मर्जी मैं हो ये कह रहा हूँ एवर्टन वाले गेम में नहीं, वैसे बोल रहा हूँ कि लिवरपूल के लिए वो फिट हो जाता है। डजंट मैटर इफ ही हैज अ हर्निया द वीक बिफोर, उसको लिवरपूल के मैच में खेलना ही खेलना है। लेकिन आई वांट यू टू गेट द लिवरपूल गाइज ओपिनियन ऑन मेसन माउंट। मेसन माउंट मेरा ख्याल है आपको तकरीबन पहले भी बोला था कि वी आर फेवरेट्स फॉर हिम फ्यू वीक्स अगो। याद है आपको? बोला था मैंने कि if he doesn't sign for Chelsea, we are front of the queue. अभी रिपोर्ट्स आ गई कि ग्रीस के सोर्सेस सही थे। We are front of the queue. You like him, Manas? Yeah, of course, it feels good कि a player of his caliber is being linked, because and he's young as well, and बट मेरे को फॉर सम रीजन ना, जब मैं मेसन माउंट के बारे में सोचता हूँ, मेरा दिल और दिमाग यही कहता है कि वो नया डील साइन कर लेगा चेल्सी के साथ। अगर नहीं किया, सो आई हैव इनफ फेथ इन यू ग्रिस भाई, मैं पे आपको बहुत भरोसा है कि आप करवा दोगे, यू विल गेट दिस डील ओवर द लाइन। नहीं, मेरे पे ना करो। वो जो बैठा हुआ है ना, वो बिलियनर जो बैठा हुआ है ना, उसने साइन करना है चेक यार। लेकिन एज अ प्लेयर, as a profile, as a stylistically, the way we play, ललाना, मेरे को ललाना की याद आती है थोड़ी मैंने बहुत। वही मैंने कंपैरिजन किया था। यही बोला था कि
I see him doing the Lallana thing जो क्लॉप के पहले 2-3 साल में जो ललाना उसका फेवरेट था यार. ललाना को तो वो निचोड़ता था. लाइक आप गन्ने का जूस पीते हो ना, तो अपने देसी स्टाइल में वो आप ऐसे 2-3 डंडी डालते हो, फिर वो बाहर आता है निचोड़ के, फिर आप वापस डालते हो 6-7 बार. आई सी अस प्लेइंग मेसन माउंट काफी ज्यादा. See, the only way we can convince Mason Mount to join, agar like he's weighing कि should I sign extension with Chelsea or should I sign for Liverpool, हम तो उसको we'll give him more playing time. मेरे से बाबा can correct me if I'm wrong. I think अगर वो लिवरपूल आएगा उसको playing time ज्यादा मिलेगा. And I think that is a key factor in his career right now because वो 24 का है, वो इंग्लैंड के लिए खेलना चाहता है. अगर वो चेल्सी के लिए रेगुलर नहीं है तो वो कहाँ इंग्लैंड के लिए खेलेगा. Klopp के सिस्टम में of course Klopp is still one of the best managers in the world. He has an attracting power. Again, अगर it's within our budget, which I say 40-50, I think it's definitely having a go for him. But अगर उससे ज्यादा Mason, होगा एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, then I don't know. Mason Mount का agent was at Anfield in the Merseyside derby. So कब था क्या कर Merseyside रही है? derby? Everton, against Everton. So we have spoken to his people, we have spoken to his agent, and he's very happy to come to Liverpool if he doesn't sign. Daksh, would you take him at Arsenal? What do you think of Mason Mount? Or do you think he's suited to a Liverpool team? Baba की तरफ आएंगे for the final what he thinks because he's seen Mason Mount the most. लेकिन तेरा क्या ख्याल है? Yeah, technically we do need a left-sided 8, yeah, but Does he improve? Does he improve Xhaka? I definitely काफी high energy player है, can shoot, can create. He's a good player at set pieces also, if I'm not mistaken. बताओ क्या ग्रिस भाई, he'll ruin our wage structure. He'll ruin our wage structure and he'll ruin our transfer budget. Is English tax, एक तो rival से खरीद रहे हो, ठीक है? He's an up. I think he'll improve. मुश्किल हो जाएगा. I think we might actually inquire about him, but I don't think seriously हम pursue करेंगे उसको. He'll ask for too much money personally. Saka को हमने अभी जाके 300k दिए. Mason Mount कितने पे हुआ है तो बाबा ही 180 बताएंगे. पे 180 का है उसका अभी. Like apparently Chelsea have offered him a deal for 180k per week. It's not out of the world. Saka को 300 अच्छा. दे रहे हो. 180 is very reasonable for Mount. I अगर think आप मेरे ख्याल में it's not about the wages, it's about the length of the contract. निधि तेरा क्या opinion है Mason Mount के बारे में before we get the final out view of Baba? I love Mason Mount. I think Mason Mount, if Chelsea let him go, this will be one of those transfers again that Chelsea will regret, right? But मेरे को भी वही लगता है कि I think in the end he will just sign a new contract at Chelsea because see what happened with the likes of Salah or KDB or none of them were Chelsea boys. This guy is Cobham, right? So मतलब उसका है वो. I think it will come down to if they can reach to an agreement. I think most likely he will sign a contract. If not, 40-50 million to no brainer. Snap him up. He is an amazing player, right? He's an amazing player. I think right now he's also suffered a little bit because he's played under so many managers, so many different styles. And उसका भी थोड़ा सा ना मेरे को ट्रेंट वाला प्रॉब्लम लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा खिला दिया उसको, बहुत ज्यादा फुटबॉल खिला दिया आपने उसको. Both under Lampard के अंडर he played a lot of football. Lampard का तो है ही वो बेटा था ना, वो Lampard का बेटा ही है ना वो. And Tuchel के अंडर he played a lot of football. Fatigue है. I think he's amazing. If it's possible, we should sign him. Yeah, I think Nidhi bhai is right. Just one thing. अगर आप उसका time manage कर लो ना, I think even at Arsenal he'll be really good. If what Manas is saying is 180 and something, and you give him let's say 240, 250 भी दे दो उसको for Arsenal. No, he's on 80-90k right now. Okay, that's it. और उसको Baba will correct us, of course. But for that, I think 70 million is a little too much. I mind 40 to 60 also.
40 to 60 भी चलेगा to be honest for Arsenal. तीन सवाल है बाबा। पहले तो ये है बाबा, हाउ आर यू हियर एंड मटीज स्ट्रीम? पहले तो ये सवाल का जवाब प्लीज। वो मटीज की Super स्ट्रीम नहीं power. है, प्रीमियर है भाई वो। प्रीमियर में Doctor लाइव Strange. जैसा चलता है। Doctor समझ Strange. आ गई? हाँ। You understand? You better be understand. दूसरा सवाल ये है, Mason Mount, are you happy to let? Okay, दूसरा सवाल ये है, will Mason Mount sign the extension in your opinion? Yes. And then third question, if he doesn't sign, are you happy to sell him? Or are you going to be unhappy seller? इसमें ना मतलब, दो, do you rate him? of course I rate him. I want him to stay long term. दो तीन चीजें हैं इसमें। तो क्या है, अभी फाइनेंशियल फेयर प्ले के हमारे वो आए हैं रिजल्ट्स, तो हम थोड़ा सा ओवर वो चल रहे हैं, मतलब जो होना चाहिए, जितना आपका मतलब होना चाहिए खर्चा, उसके थोड़ा सा हम ओवर शूट कर दिए उसको। ऑब्वियसली इतना खर्चा किया तो होना ही था। तो प्लेयर सेल्स होंगी तो वो चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये है कि पहली बात तो अगर आप 3 एट द बैक खेल रहे हो या आप 4-2-3-1 खेलते हो तो उसमें माउंट की जगह बनाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ही इज़ योर 8 या इज़ नॉट योर प्रॉपर 10 या विंगर नहीं है वो आपका। एंड इफ़ यू आर टू प्ले 3 एट द बैक विद फ्रंट 3 या वो अटैकिंग मिडफील्डर विद आगे 2 स्ट्राइकर, तो एनकुंकू आ रहा है आपके पास वो रोल खेलने के लिए अगले सीजन। तो इन 2 सिस्टम्स में तो जगह नहीं बनती और यही 2 सिस्टम पॉटर खिलाता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैनेजर कौन होने वाला है अगले सीजन। क्या पॉटर से ही परसिस्ट करेंगे? अगर पॉटर मैनेजर है तो क्या पॉटर की सुनी जाएगी, उसको चाहिए माउंट की नहीं चाहिए? दूसरी चीज़, मैंने फाइनेंशियल फेयर प्ले वाला इसलिए पॉइंट बोला था क्योंकि अगर आप जाओ फेलिक्स को परमानेंट करते हो तो यू वुड हैव टू पे अनदर 80-90 मिलियन उसके लिए। तो वो एक और आपको हिट मारेगा आपके FFP रेगुलेशंस में जो भी वो होता है। तो अगर आप फेलिक्स को परमानेंट नहीं कर रहे हो और माउंट को आप जाने दे रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो फिर आपके पास वो काइंड ऑफ वो फ्लोटर खेलने वाला प्लेयर ही नहीं रहा स्ट्राइकर के पीछे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो 70 मिलियन वाला जो चेल्सी ने प्राइस टैग लगा दिया, आई थिंक दे हैव बॉट देमसेल्व्स सम टाइम। एक और सीजन दे हैव गिवन देमसेल्व्स कि माउंट के साथ अगर अगला सीजन उसका अच्छा हो जाता है, क्योंकि मतलब आज की तारीख में चेल्सी के लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम 40 मिलियन में इफ यू लूज हिम या इफ यू लूज हिम फॉर फ्री, इट्स वन इन द सेम थिंग फॉर चेल्सी जैसे क्लब के लिए। तो एटलीस्ट तो इस समर में अगर हम 50 मिलियन का प्राइस टैग लगा दे कोई भी आके ले लेगा, बट फ्री में जाएगा अगले से मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन फ्री में जाएगा नेक्स्ट से नेक्स्ट समर में। तो एक सीजन और मिल जाएगा, थोड़ी मैनेजरियल सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी कि पॉटर लॉन्ग टर्म है या नागल्समैन आ रहा है या कोई और आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कांटेक्ट किया है चेल्सी ने नागल्समैन को कि स्टैंड बाय पे रहे इन केस कुछ होता है, तो मतलब ही विल बी द फर्स्ट चॉइस इन केस कुछ होता है। तो अब नागल्समैन बोलेगी मुझे तो चाहिए माउंट, फिर क्या करोगे आप? तो आई थिंक ये इतनी सारी चीज़ें मुझे लग रहा है एक साथ इसलिए हो गई हैं कि तो आपको फेयर प्ले भी जो है आपको उसको कंट्रोल में रखना है, प्लस आप अपने मैनेजर को लेके भी सर्टेन नहीं हो, प्लस इट्स मेसन माउंट, इट्स नॉट लाइक अ लॉफ्टस चीक और अ चालोवा और अ एम्पाडू जिसने मतलब जो बस आके और मेक शिफ्ट तरीके से खेल गया आपकी टीम पे, या 2 साल आपका प्लेयर ऑफ द सीजन था। तो सारी चीज़ें हैं। टॉड बोली जब आया था तो फर्स्ट चीज़ जो उस प्रायोरिटाइज की थी उसने, जैसा सब जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे थे, इज टू एक्सटेंड रीस जेम्स एंड मेसन माउंट। रीस जेम्स को तो कर दिया, थैंक गॉड कर दिया, वरना रियल मैड्रिड वाले हर मेरे वीडियो पे अरे रीस जेम्स टू मैड्रिड इन 2023, रीस जेम्स टू मैड्रिड इन 2023, तो वो बंद हुआ थैंकफुली, ठीक है। अब वो एटलीस्ट 2 सीजन तक तो नहीं होगा। मेसन माउंट का ये हुआ कि जब टॉड बोली आया तो उसकी परफॉर्मेंसेस डाउन हो गई। वो ओनर इतना ज़्यादा हैंड्स ऑन है हर चीज़ को लेके कि वो डिसाइड कर रहा है कि टीम में कौन प्लेयर रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ही हिमसेल्फ वांट्स टू गिव सम टाइम कि मैं एक बार देख लूँ कहीं अच्छा प्लेयर हाथ से ना निकल जाए। ये मुझे लग रहा है बाहर से देख के, हो सकता है अंदर चीज़ें एकदम अलग हो। और एजेंट का किसी दूसरी टीम के मैच में आना, वो इतना मैं रीड बिटवीन द लाइंस नहीं करूंगा। इट्स जस्ट दैट ही इज आल्सो वेइंग हिज ऑप्शंस कि अगर भाई नहीं होता तो ऐसा तो नहीं हो ना कि लास्ट मोमेंट पे लिवरपूल कोई और प्लेयर साइन कर ले और मेरे लिए वो रास्ता भी बंद हो जाए। तो वो तो है, वो तो प्रोफेशनल है। और लॉयल्टी तो मैं
लॉयल्टी जैसा शब्द तो है ही नहीं। मतलब मैं कोई वो ऐसा डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा कि यार मेसन माउंट क्यों चला गया यार, ये तो लॉयल है, ही शुड प्ले फॉर अस इवन ऑन 10K पर वीक बिकॉज ही इज अ कॉबम ग्रेजुएट थ्रू एंड थ्रू। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मॉडर्न फुटबॉल है, ये सब चीजें नहीं होती यहाँ पे। अगर ऐसा होता तो माने यहीं रिटायर होता लिवरपूल में। इतनी भाई प्रोफेशनल होते हैं प्लेयर्स यार, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मुझे लगता है कि मतलब मेसन माउंट तो फाड़ देगा लिवरपूल जाके यार। दिस वुड बी वन ट्रांसफर दैट वी वुड रिग्रेट द मोस्ट। जैसे कौन बोल रहा था कि he will be निधि बोल रहा था कि he will be one of those मोहम्मद साला, केविन डी ब्रुयना, लुकाकू the first time round। साला का तो मैं इतना भी नहीं मानता, साला क्योंकि वी हैड गुड विंगर्स साला के बाद भी, उस लेवल के नहीं थे बट वी वन थिंग्स। ठीक है, केडीबी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि केडीबी जनरेशनल था, ठीक है, और वो जिस तरीके से खेल गया और वो जो उसका इम्पैक्ट है सिटी में। साला भी जनरेशनल है यार, साला के भी फिगर्स जनरेशनल फिगर्स हैं। नहीं अच्छा है, आप ऑफेंड मत हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास हजार था तो टू लेट। साला यार लिवरपूल फैंस की तो बिल्कुल ये दे स्लीप मैन, आई हैड टू वेक अप यार। उसने बोल दिया केडीबी जनरेशनल और साला जनरेशनल लास्ट 5-6 सीजंस। बात तो खत्म करने दे। अच्छा नहीं, बात नहीं खत्म करने देते यार। You have to jump on the neck straight away। तो वो वाली बात है। तो आई थिंक ठीक है, मतलब जाएगा तो दुख होगा बट आई वुडंट वांट हिम टू गो टू अ डायरेक्ट राइवल। मतलब प्रीमियर लीग में ही चला जाएगा अगर किसी टॉप 6 क्लब में, तो उससे तो खराब बात नहीं हो सकती है। मतलब जैसे बायर्न का लिंक आया, बायर्न का लिंक आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बायर्न का लिंक आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बायर्न उसके लिए इतना गंदा मूव होगा ना बाबा। नहीं जाएगा। उधर मुसियाला है, साने है, माने है, मुलर है, मतलब भरे हुए गनाबरी है। अरे मतलब उत्कर्ष चंद्रा, तुमको यार बायर्न, मतलब बायर्न के लिए तो कुछ बोल दो तो तुम तो ऐसे हो जाता है, व्हाई नॉट मुसियाला। मुसियाला का केस पता है नहीं तुमको, और सब बोलते रहते हैं मुसियाला इज द बिगेस्ट मिस्टेक चेल्सी हैव मेड। अरे भाई उसके घर वालों को जर्मनी शिफ्ट होना था, ही वाज अ 15-year-old बॉय। रोक लेंगे हम उसको कि मत जा तू, फालतू की बात है। व्हाई नॉट मुसियाला। और फिर मेरे को मोरिन्यो का हर जगह जहर फैलाने आ जाते हो यार तुम। बायर्न व्हाई नॉट मुसियाला। बट टेकिंग दैट अवे, मैंने जोसे मोरिन्यो का, मेरे को बहुत सही इंटरव्यू आया था। उसको पूछा था डू यू रिग्रेट सेलिंग साला, उसने बोला कि आई एम द मैन हु साइंड साला। इज कि साला वांटेड टू लीव, वो नहीं चाहता साला जाए, वो गया खेला वेला लोन वोन पे, फिर उससे बोला कि भाई मेरे को फर्स्ट टीम किधर खेलना है। जोसे मोरिन्यो ने बोला वो जाना चाहता था। जोसे मोरिन्यो नेवर वांटेड साला टू लीव। सो इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स। अब जैसे सादियो माने का पापा ने बोला लॉयल्टी है वो, आई मीन सादियो माने ने आके बोल दिया यार लिसन आई लव यू बट मेरे को जाना है। अब रोक के थोड़ी रखोगे, मतलब उसने 1 साल का नोटिस पीरियड सर्व किया। यार पब्लिक ये नहीं समझती है कि माने ग्रू अप इन लाइक उसका जो फुटबॉल एजुकेशन है दैट हैपेंड इन ऑस्ट्रिया। ही हैज ऑलवेज लुक्ड अप टू बुंदेसलीगा मैन इन हिज यूथ। एंड बुंदेसलीगा के टॉप पे जो क्लब है वो अगर उसको चाहता है, इट्स लाइक अ चाइल्डहुड ड्रीम यार। मतलब इट्स हाउ डू यू नॉट गेट इट, इट्स लाइक अ ड्रीम कंपनी। इट्स नॉट लाइक यू हेट योर करंट कंपनी, बट आज तेरे को आएगा तो तू कंसिडर करेगा ना, तू जाएगा ना। Of course। क्रिस भाई इसका आंसर आप तो। Saeed बोल रहा है, Chris, do you think we'll sign Jude or Mount, or is Mount is just an alternative to Jude? Mount is nothing like an alternative to Jude. Positionally, stylistically, price-wise, contract situation-wise, profile of player-wise. But I'm gonna say Jude to bola na ke Jude is coming. I think Mount, if he doesn't sign, and this is the key, just Baba Borata, Nidhi thinks he will sign. Dax, do you think Mount will stay at Chelsea? This is quick fire answers. Yeah, 100%. Yeah, he's gonna stay at Chelsea. 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा. Yeah, we also, I understand बाबा कह रहे loyalty कुछ नहीं होती, but now his first preference would, it's just जैसे सब लोग comments में भी कह रहे थे यार, it's just a difference in contract length. वो कुछ ना कुछ करके someone will cave, and I think he's
probably prefers to stay at Chelsea, and otherwise he'll be like, "Take a name there if you want. If I'm not getting what I want, then I'll move to." I don't Other think he's staying. I don't think he's staying. I don't think he's staying. No, I मेरे don't think हिसाब he's से staying. प्लेइंग टाइम यार, प्लेइंग टाइम विल बी मैसिव. नहीं, जैसे I बाबा think ने it's. Yeah, I think playing time तो उसको listen. Mount कहाँ जाएगा? He's gonna go to a big club. No, I'm saying at ठीक है ना? Chelsea. नहीं वैसे बोल रहा हूँ. Even if he goes to if he doesn't stay at Chelsea, he's gonna go to a big club. Bayern Munich की बात कर रहे हैं, Liverpool की बात कर रहे हैं, Manchester United की बात कर रहे हैं. All three clubs have abundance of talent, United abundance में of players. So competition or playing time, उसको there's no way guaranteed unless he wants to go to Spurs. Yeah, Newcastle. Baba No. Bhagat Singh is for. No, I'm just saying. If he goes to Spurs or Newcastle, he's guaranteed playing time. First name on the team sheet, etc., etc. The other clubs that we've mentioned, is he guaranteed first name on the team sheet? No. Is he guaranteed team playing time? No. मेरे ख्याल है At उसको ना- Liverpool, I think yes. At Liverpool. I think No, he's not going to be. No, next season he's not going to be. If he comes, he's not guaranteed playing time. No, he won't be because he's going to be playing, he's going to be one of the incoming players. मुझे नहीं लग रहा कि he's going to यार उत्कर्ष चंद्रा तुम अजीब आदमी हो यार, कैसे रिग्रेट करेंगे मूसियाला को? मुझे एक बात बताओ, अगर इंग्लैंड के लिए खेलता है क्या वो अपनी इंटरनेशनल फुटबॉल, जर्मनी के लिए खेलता है ना बे, उसको जर्मनी जाना था बे, समझ नहीं आ रही क्या तेरे को बात? जर्मनी जाना था उसको. It was not because he was not good enough कि हमने डिसीजन ले लिया to sell him. He wanted to live somewhere else. Chelsea इंग्लैंड का क्लब है, बायर्न म्यूनिख जर्मनी का क्लब है. बेसिक ज्योग्राफी. यार म्यूट बाबा कर दो सुनो. यार. बाबा सुनो. मुसियाला को म्यूट कर दो यार. कुछ मुसियाला को चेल्सी म्यूट फैन कर दो. एग्री भी कर रहे हैं उससे. Yes, definitely we will regret मूसियाला more than KDB और साला. अरे बाबा सुनो. यार म्यूट कर दो. मुसियाला को म्यूट कर. एक बहुत फेमस आदमी ने बोला था कि आपदा को अवसर में बदलो. कल आपको इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, वीडियो का आइडिया नहीं है, आप एक मूसियाला की फोटो रखो और वो मीम देखा है ना जिसमें ऐसे एक स्टैचू के आगे ऐसे रोते रहते हैं, वो वीडियो अपलोड कर दो. व्यूज ही व्यूज है यार. ये मुसियाला यार क्या बार मुसियाला की बात rant बाबा. मैं तो मेरे को पता है बाबा को बर्थडे गिफ्ट पे क्या देना है. चेल्सी जर्सी ले लूंगा मैं तो, मेरे को क्या है. लेकिन मुझे नहीं लग रहा. If you asked me a couple of weeks ago, I would have still said Mount is going to come to Newman. अभी थोड़ा सा ना टेंशंस हो गए. पता है उत्कर्ष चंद्रा, हम सबसे ज्यादा किसको रिग्रेट करेंगे? एम्बापे ने ट्रायल दिया था चेल्सी के लिए जब 12 साल का था वो, और हमने रिग्रेट कर दिया उसको क्योंकि डिफेंसिवली ही वाज नॉट दैट गुड. ये अब बोल दे मूसियाला एम्बापे से भी बड़ा रिग्रेट हो जाएगा. यार अजीब बात है यार. यार बाबा को क्यों छेड़ते हो यार? मत छेड़ो यार, मत करो. But look, I think all our clubs are in for an exciting summer. Definitely Chelsea, क्योंकि उनका काम है signing players. Arsenal definitely because we know they are after a certain profile of player, and definitely Liverpool because we need, otherwise next season relegation battle, here we come. और क्या कह सकते हैं? So I think it's going to be interesting. Tomorrow we will see the results, fixtures, some massive fixtures. Yeah, Newcastle, Manchester United के तो हमने बोला ही नहीं. That's also a huge game. Newcastle, याद है हम बोल रहे थे कि we don't know how the effect of the League Cup's going to have on them. लेकिन they've come good again. Isaac is coming to form. They needed a goal scorer. Newcastle, Manchester United. Manus, very quickly, what's your thoughts on Newcastle, Manchester United? It's a crucial game. वो आपने नहीं देखा ना कि I hope both teams lose. Both teams lose. This is that fixture for me. On a serious note, यार. Do we want draw then? We want a draw or we want? I want a Manchester United win there. मैं top 4 के बारे में सोच रहा हूँ ना. नहीं लेकिन if Newcastle win, they're only 3 points behind United. So अगर तेरी नजर Newcastle पे है, तो by that logic तेरी नजर United पे भी होनी चाहिए. नहीं, but मेरी नजर बहुत realistic है ये season.
मैं सिर्फ ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर नहीं देख रहा हूँ। तो ऊपर मेरे नहीं जो देख रहा। जो एकदम पास में है ना, तो मैं उसके हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाए फॉर द ग्रेटर गुड की, ताकि हम टॉप 4। बट इट्स गोना बी अ फकिंग टफ गेम। Mad game. I think It's that could gonna be be a mad game. passionate game. Passionate game. Nidhi, Yeah, Newcastle, and Manchester United. Sorry. I want United to win. I'm being very selfish. मतलब अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है वैसे, but if it helps us, मतलब we have to help ourselves, number one. But जो भी आजू बाजू से जो भी हेल्प मिल रहा है, मतलब बेसिकली इट्स लाइक आप देख लो, मतलब आपको उतरना है स्टेशन पे, मुंबई लोकल में भीड़ है, तो आप खड़े हो जाओ सही जगह पे, बाकी लोग आपको उतार देंगे, तो ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। We have to end on an analogy, of course. Nidhi's analogy. but no, sorry, but no, Casemiro is going to, and Newcastle playing at home Yeah. after international break. Oh, Huge. मजा आएगा. मजा आएगा. Spicy. I really hope that we don't spoil our weekend right Saturday सुबह ताकि मैं ये सब मैचेस देख सकूं. आपको एक बात बताओ, अगर हम लोग फर्स्ट मैच हार जाते हैं ना सैटरडे का, oh fuck, to watch football after that till Sunday night is yeah. So I'm really hoping It's I'm in like good being a, shape. it's like being a Spurs fan. So Honestly. I really hope we do something good ताकि I am able to see this game in a good way. Yes, sorry, Daksh, sorry. हाँ नहीं, मेरा तो यार नो कैसेमिरो इज गोना बी ह्यूज बिकॉज Huge. फुलम में भी यार काफी मतलब खींच लिया था रोनाल्डो को. दैट वाज जस्ट अ मोमेंट ऑफ लूजिंग देयर हेड्स Yep. व्हिच एंड पागल हो गया था. द गेम. हाँ बट यार साबित्सर भी नहीं है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. एरिक्सन माइट बी बैक, आई एम नॉट श्योर इट, बट नहीं, मुश्किल है. Sabitzer will be back. Ericsson McTominay scored 4 Tomine goals. यार 2 goals. और हाँ, fire. 2 goals. Fire. But yes, McFred again, if it's McFred or whoever it is in the midfield, yeah, good chance for Newcastle. There, I think Guimaraes is going to be there. Isak is in such good form now, yeah. Alexander Isak. Yeah, so could be a very, very, very good game. But I would give it a 1-1 draw. मेरे को लग रहा है 1-1 हो जाएगा. बाबा. क्या सॉरी. मुसियाला की बात हो रही थी यार. ध्यान लगा रहा था. मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छा प्लेयर है. चेल्सी बहुत रिग्रेट करेगी. रोज रोमन अब्रामोविच रोता है, रोज. आज भी जब उसको क्या डील ऑफर करी थी 2019 में, ठीक है, चेल्सी ने, बट उसको कहा था तू लोन पे जाएगा 1-2 सीजन. उसने कहा फिर नहीं, वहां पे उसको इमीडिएट प्लेइंग टाइम मिल रहा था इसलिए चला गया. अब ठीक है, कर लो कोई नहीं, छोड़ो. अच्छा, वो एक दूसरी भी छोटी सी गेम है. मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूकासल भी. मैन यूनाइटेड न्यूकासल एट सेंट जेम्स पार्क. ड्रॉ. अच्छा, ड्रॉ या न्यूकासल विन. looks like थोड़ी लैकलस्टर नहीं लग रही यूनाइटेड पे 3-4 गेम. looks लग रही है. डिसेंट सी लग रही है मेरे को बाबा. मुझे लग रहा है कि न्यूकासल का ना रिवेंज बहुत ना स्ट्रांग होगा. फैंस बिहाइंड देम. नो कैसेमिरो, लीग कप का रिवेंज. आई थिंक न्यूकासल विल टर्न देम ओवर पर्सनली. और फिर हमें ना, चलो हमें क्या रिग्रेट करना है. हमें पे देखते हैं मैन सिटी क्या करते हैं हमारे साथ. First we see that, then we see Leeds and Arsenal. Chelsea is playing Aston Villa. Aston Villa at home, Baba. हाँ, स्टैमफोर्ड ब्रिज में. Tricky game. अभी तो सब कुछ ट्रिकी है चेल्सी के लिए. Tricky. नहीं, Aston Villa are better away. वो मूसियाला नहीं है ना हमारी टीम में, वरना जीत जाते. मूसियाला खेल रहा होता ना तो जीत जाते हैं. वो big loss. रिग्रेट कर रहा हूँ मैं. मूसियाला होता काश. big loss. मूसियाला होता, लेवेंडोस्की होता, किमिक होता, गोरेट्स्का होता, और कौन है बाएंगे, अल्फोंसो डेविस. ओए. हां, तो जीत जाते. फिर शायद जीत जाते. अब मैं टन मैसेज बाबा हैव पिक. माने क्यों नहीं बोला अभी, मेरे को बुरा लग गया. माने अभी आया है ना. माने still not a Bundesliga winner. All these are proven talents. समझ रहे हो ना. Chelsea couldn't convince, Bayern can convince. समझ रहे हो ना आप. अच्छा, थोड़ा सा FPL का अपडेट और थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन showing off. I'm in the top 1500 in the world now. क्या बात है. Top 1500 in the world. Yeah man. भाई मतलब
कुछ बताओ हाँ क्या यार, करना है? हाँ यार, बस होता है. Advice चाहिए तो, you know, I mean, email me something. What are you winning, Grizz bhai? Top 1500 should get something, no? No, Musiala nothing, man. jersey. Musiala jersey. कुछ नहीं मिलता यार. कुछ नहीं मिलता. There used to be a manager of the month in the different one that I used to play, but this one is just one game. Lekin wo, I mean, a lot of leagues, so those leagues have prizes. For example, different leagues. लेकिन ये man, FPL खेलते हो ना सब लोग? हाँ हाँ, निधि मैंने भाई तो नहीं मूसियाला को ले भी रखा है अपनी टीम में. बाबा ये स्ट्रीम के बाद ना आई हैव वन मैसेज फॉर यू. खेलते. सोचो मत, बस कर दे. बिल्कुल. Triple captain Musiala every week. मेरा तो फेवरेट म्यूजिशियन भी सिद्धू मूसेवाला है. Listen, बाबा मैं- जब और मैं बाबा याद जब करने कनाडा जाएंगे तो पहले एनिमल देखेंगे, वो होगा मूस. बाबा's favorite breakfast. बाबे का फेवरेट डिजर्ट भी चॉकलेट मूस है. मूस केक. मूस केक. नहीं, लेकिन हम बाबा की मेरा- फेवरेट मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर बिकॉज़ जमाल मूसियाला ना पापा. मेरा फेवरेट गाना है मुसु मुसु हासी. आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट म्यूजली. क्या बात. लेकिन we will do a Brown Monday FPL league. I'm going to put it on my socials. Next season करेंगे हम. Next We'll season. invite everyone. Yeah, next we'll invite everyone. Next season I'm going to learn FPL and I'm going to play. Oh हो. फिर तो बहुत खतरा है. हाँ. रुको मैं फोन का वॉलपेपर निधि ने ऐसे बोला कि लगाओ पेन. हाँ. मैं Udemy से अगर तेरी मैं टीम का Udemy नाम से course करता हूँ. एनालिजी FC नहीं हुआ ना तो मैं बहुत भड़कूंगा भाई. लाइक नहीं advice. Free advice. Next season तो I'm going to start charging for advice. लेकिन निधि तू भाई है अपना. Free advice. Done. Done, हो गया, done. बाबा अपना वॉलपेपर चेंज कर रहा है क्या मूसियाला? हाँ मूसियाला लगा रहा हूँ. मैं सेक्सी से चिकन टिक्का मुसियाला. Chicken tikka musiala. हाँ यार. Listen. Enough. Thank you very much for joining in, people. Still over 420 of you guys, but just 200 likes, which is like half ratio. I don't know who pissed you off. We know who pissed Baba off. लेकिन मूसियाला, मैं बस ये बता रहा हूँ, मूसियाला को आज जो हिचकियां आई होंगी ना. यार ये did ये Musiala. Let's hope कि मूसियाला मतलब रोजा नहीं रख रहा है भाई, नहीं तो हिचकिया पानी वानी पीना पड़ता है. Let's hope for this thing. हाँ यार. I must go. I'm gonna have 1 hour rest before I open my fast as well. 1 घंटा रहता है. 1 hour 15 minutes. बहुत मेहरबानी. बहुत thank you. All of you in the chat, thank you so much. ओ यार क्या हो गया यार. I think ये goated stream हो गया ब्राउन मुंडे का. Yeah. यार. This is unparalleled. I've never seen Baba like this, man. I've never seen. You learn new things every day. मतलब लिमिट होती है ना यार हर चीज की. एक मतलब हर चीज में मतलब पीकू पिक्चर देखिए, उसमें ना एक सीन होता है जिसमें इरफान खान अमिताभ बच्चन को बोलता है कि आप हर चीज में अपनी पॉटी कैसे ले आते हैं, तो आप हर चीज में बायन कैसे घुसा देते हैं. माउंट की डिस्कशन चल रही है और बायन आ गई. माउंट और लिवरपूल का, और वो कहाँ जा रहा है बायन, तो मतलब रिग्रेट और म्यूसियाल. आप हर चीज को पेट से कैसे जोड़ देते हैं, कमाल है. It's the history, huh? Now अभी समझ आ गई कोई history की, huh? So there is a history Bayern की. ठीक है. Musiala, Bayern and Baba. Clocked. People slap the like button before we go out. Epic stream from the Mondays. Thank you very much, Sean. Thank you very much, guys. Hope you all enjoyed it. Manas, Nidhi, Baba, Daksh, we will be back next week. Hopefully feeling, we don't know how we'll be feeling. All depends on our teams. Yep. All depends on our teams. Mood कैसे होगा, क्या नहीं होगा. Riyad Mara says, Grizz, you're going to be put in a blender Saturday, Putter.
यार मैं इथे आराम नाल बैठे होऊंगा मैं किथे पुत्र बना सकदा मैं किथे ब्लेंडर च बनांगा मैं I'm going to be watching on my sofa जाए ब्लेंडर में फबीनियो एंड नूनेज मुझे क्यों भेज रहे हो ब्लेंडर में यार मैं ठीक हूँ subscribe of course to all of the channels not just to A All for of them, Dutch all of subscribe them. all of the channels make sure you subscribe to the guys we will be back next Friday or Thursday we don't know yet is there any Champions League next week No, we play Chelsea though midweek. oh yes of course we play Chelsea midweek thinking probably Thursday or Friday for more gupshup for more heated debates, for more passionate shows of support of our teams, our clubs, our ex-players, our youth players. We'll be back. Take care. See you Sabko, guys. Khuda Hafiz. See you soon. Bye-bye. Bye. Bye.